तो एलिमिनेशन लोग आ सकता है। वाइन स्पोर्ट्स पिछले मैच के अंदर बहुत प्यारा खेला था और देखिए रसील ने बहुत ही ज्यादा प्यारा नॉकआउट निकाला जाएगा वाइन स्पोर्ट्स के ऊपर। वॉक्सी 5 डाउन टू द नीज, अगर रिवाइवल नहीं आया कोई ऑर्डर कर दे यार। मैं करता हूँ। की एवियस के पास एक अपर हैंड रहेगा, बट पीछे से एक और टीम यहाँ से ज्वाइन करती हुई एज। ये ही तो चीज मैं बोल रहा था एज, क्योंकि ये जो जोन है मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स शुरुआती जोन से ही जोन के अंदर थी और दूसरे जोन का अगर हार्ड शिफ्ट आया तो बहुत सारी टीम्स रोटेशन क्लैश के अंदर फंस सकती हैं। तो टीम्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड स्पेशली आईजीएल्स को जो अपनी रोटेशन है वो सोच समझ के लेनी पड़ेगी। Yeah, rotations are probably going to be, the major factor, especially in the map of Erangel and Miramar as well, as a matter of fact. But Miramar, it comes later. You probably have stage 4, maybe stage 3. Up until stage 3, you can probably just be anywhere on the map. But stage 4, that is when the rotations are going to be much more important and crucial. But at the moment, Boom will get eliminated. Unfortunately, no elimination points this time around, so they will not be getting any points from this match. As we now divert our attention towards 4T once again, they might be able to confirm the frag onto the player on the side of APG. He's in the water. I don't think anyone can save him at the moment. Yeah, that could be the case, but Glue, wait, slowly and steadily losing the players. ये सही नहीं है Glue, क्योंकि आप लोगों का पहला मैच इतना ज़्यादा खास नहीं रहा। मैं बोलूँगा decent मैच तो था, पर टीम Glue अभी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज डील करती हुई। HKG on the other hand, फेज 1 के अंदर स्पेशली चौथे और पांचवें दिन के अंदर उन्होंने बहुत ही प्यारी रिकवरी करी थी। I mean, they were on the third page edge. धीरे धीरे वो लोग दूसरे पेज के अंदर आए और पहले पेज के अंदर 5वां फायदा लिया था 5वें दिन के अंदर। और उसके बाद में 4th राइव जो टीम थी उन्होंने डोमिनेट भी किया, तो उनका स्पॉट ले लिया गया था। बट जैसा वो लुक क्योंकि टीम सीक्रेट 2 एलिमिनेशन ले लिए हैं उन्होंने, और ये जो गोली बरस रही है रैंगल के मैप पे, यही मैं बोल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मैं बोल रहा था कि ये जो रोटेशन और ये जो क्लैशेस बनेंगे और ये जो टकराव होगी इन टीम्स की, इनके अंदर बहुत सारी टीम्स अपने प्लेयर्स को लूज करेगी। और देखिए यहाँ पे जो खून का मंजर है हम लोग देख सकते हैं, 15 की 15 टीम तो सर्वाइव कर रही है। हम लोगों को कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट भी हो चुके हैं, कुछ टीम्स भी एलिमिनेट हो चुकी है। वी स्टार्टेड ऑफ विद 18 टीम्स, सो 3 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। उनके अंदर बूम ई-स्पोर्ट्स, होरा ई-स्पोर्ट्स और एचकेजी, तीनों की तीनों टीम्स यहाँ पे एलिमिनेट तो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था घाटका के रीजन के अंदर डे नंबर 6 के अंदर बूम ई-स्पोर्ट्स ने ऐसे ही चिकन डिनर निकाला था, और ये जो स्पॉट है सीवर्स का, ऑल्टर ईगोज वहां पे पहुंच चुकी है। जो टीम है पाकिस्तान से ASI 8 की, 3 एलिमिनेशन इन लोगों के पास में भी रहेंगे। बट वाइन ई-स्पोर्ट्स पीछे से ये जो चील की निगाहों से देख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे एलिमिनेशन नॉकआउट्स आएंगे वाइन ई-स्पोर्ट्स सॉरी ASI 8 के ऊपर। SKG getting eliminated now. That was something I was not expecting to see anytime soon. Glubdog, actually, the last suburban player, he will be managing to take down one of the players inside of ASI 8, so that is looking decent. But it's not over yet. He will try his best to survive for as long as possible, if I'm not wrong. And Crypto already is gone. Glue, there he is. Yes, his vision is spotted, and it's Punk. He's putting the crucial players inside of Flash as well. Tops almost getting taken down there, but the Shack is the only thing that he has in cover. Tops might get taken down as well, and he will be noted. Scar coming into play. Punk with a double before going down. He's accumulating as many points as possible. Look at this. Romeo on the side of Yangon Galacticos will drop one player on the side of 4T, but Romeo will finally get taken down. And now Yangon Galacticos, they might be, coming in for more. Palak drops in. Will be not taking the frag. He will actually get taken down before he is saved by his teammate. Oh, that's a major hit. Falak on the side of 4T. Just moments, just seconds before there's support, he is gonna get taken down. But he will. The side will be taking on the players on the side of Yangon Galacticos. But now, Mr. International, they might be taking advantage of the situation that 4T is in right now. कुछ चंद सेकंड्स का फासला था एज, वहां पर हम लोगों ने देखा फलक डाउन हुए और सीधा यहाँ पे उनका जो फिनिश है वो भी पूरा ले लिया जाएगा, क्योंकि उस टीम्स को पता है अगर आप लोग 4th राइज को या फिर फलक को नॉकआउट कर रहे हैं तो उनका किल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एंड तक जिंदा रहेंगे तो टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा, क्योंकि उनकी मिड रेंज पावर और क्लोज रेंज काउंटर का तो क्या ही कहना। बट अभी के लिए DRS XMPLZ
द यंग लैड फ्रॉम नेपाल, क्या ही गजब की क्लोज रेंज पावर रहती है। मिड रेंज में एक M416 से प्यारा नॉकआउट निकाला जाएगा वाइन स्पोर्ट्स और आरआरक्यू की भी ये टकराव स्टार्ट हो चुकी है। टीम सीक्रेट्स, ये जो ग्रेनेड जा रहा है, मेरे को लग रहा है शायद से एक नॉकआउट निकाला जा सकता है। बहुत ही प्यारा ग्रेनेड, शायद से कनेक्शन लेके जाएगा और नॉकआउट भी ले सकता है, बट नो, नॉट इनफ डैमेज to gather that knockout। and ये देखिए जो sprays ले रहे हैं, कितने ही प्यारे sprays हैं। DRS Gaming, they are just hyping up again। DRS Gaming के XMPLZ कितना प्यारा knockout निकाला और अकेला ये जो सोलोमन स्टैंडिंग है टीम सीक्रेट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम या फिर ट्रबल्सम सिचुएशंस बनाते हुए। DRS at the moment, the first cyclone with the only elimination. Under 13 teams, 39 players still in. An average of 3 players per team. Still surviving. Juke will get taken down. Team Secret feeling the heat as DRS. They're not going to let this one go. They will also make their way back into the circle as they are, slowly and steadily trying to drop more players. ASIA feeling the heat as 4T. Now finally putting the screws to them, but they will also get taken down. In the meanwhile, DRS, the only one standing, is going to be XMP. Will he be able to get more points and also revive his teammate? That is a question. They have to be careful here. Team Secret. The movement, man. The movement from this lad is brilliant. As Team Secret, they get taken down, but DRS in the meanwhile, they will lose a couple players, but the revival might come in play. We will wait to see if that is going to be the case. But 40 and ASIA, another squad going against each other. IQQ is really low. T24 is the only one standing outside of 40. ASIA, I believe K2 is the only one standing. Grenades dropping in, but it's K2. This time again, the man from the side of ASIA, who had a great game last time, will be the ones dropping 40 yet again. 8 elimination for 40, but it's not enough as we move our attention now once again to the side of Alter Ego Aries. They have lost 2 players, but they're still alive as K2 also is eliminated. I'm not really sure who dropped him, but ASIA is gone. A-Side भी जा चुकी है, 4th Rise भी जा चुकी है, दोनों की दोनों पाकिस्तानी टीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। द ज़ेवियर्स और एक और टीम एलिमिनेट होती है, ऑल्टर ईगोस। ये परफॉर्मेंस आती हुई ऑल्टर ईगोस की फाइनली हम लोगों ने देखा था एशिया बैटल्स चैप्टर 2 में। ऑल्टर ईगोस ने बहुत प्यारा परफॉर्म किया था, बट सोलोमन स्टैंडिंग रहेंगे ऑल्टर ईगोस की तरफ से। DRS भी शायद से एलिमिनेट हो चुकी है। XMPLZ ने बहुत ही ज्यादा प्यारा खेला था। वेट, DRS अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए? नहीं, एक सिंगल सोलोमन स्टैंडिंग तो जरूर है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आर की तरफ से जो जेनफोर्स ने उन्होंने प्यारा नॉकआउट निकाला। किलर वाइटी देखिए सोलोमन स्टैंडिंग, ये जो ग्रेनेड है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग जरूर लग रहा है, बट एज ये जो क्लोज रेंज बैटल है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। एकेएम और S12K का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, बट नहीं, पीछे से आरक्यू यूट्यूब कॉम का कहर मचता हुआ वो जो ग्रेनेड था खत्म करेंगे और यहाँ से DRS हो गई ढेर। बहुत प्यारा गेम प्ले उन्होंने दिखाया था, एंड स्पेशली XMPLZ, man, what a lad you are, what a man you are, a great performance in the battleground, but somewhere around edge you got eliminated. DRS, a decent game for sure. It's International, 4 players standing, but they're trying their best to take it slow. Dara 2K is gonna get dropped. 2K Esports now on the verge of getting eliminated as Hulk is the only one standing, and not for long. He will be dropped. Alter Ego will be on the run again. They are getting as many points as possible. And pretty much every team is already in the circle, so they don't really need to worry about the rotations at the moment. But look at this. Team Flash, the only one standing, is Vika, but do not take him lightly. But I think he might be, bamboozled now with the amount of players at the side of RRQ are throwing at him, and he's kind of sandwiched between them and Misfit International. ये जो हाई प्रेशर का माहौल था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ और अब इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जो प्रेशर था HLs के ऊपर रोटेशन और रिपोजिशन करने का अपनी टीम्स ऑफ प्लेयर्स को एक बढ़िया स्पॉट पे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगी रॉ पावर, 4v4 फाइट्स, और ये जो सातों टीम जिंदा है ट्राई करेंगे अपना बेस्ट की इस चिकन डिनर को अपने खिताब में लेके जा सके। बट अभी हम लोग देख सकते हैं एज कि टीम फ्लैश एक सोलोमन स्टैंडिंग के साथ में जिंदा तो है। ऑल्टर ईगोस के पास में 3 प्लेयर्स रहेंगे, आरआरक्यू के पास 4, फाइन ई स्पोर्ट्स के पास 4 और मिस्टर्स इंटरनेशनल
मैंने अभी तक उन लोग का किल फीड में नाम नहीं देखा है, तो शायद से मिसफिट्स इंटरनेशनल बूम ई-स्पोर्ट्स के जैसे एक स्लो पेस और एक धीमा धीमा गेम खेलते हुए। बट RRQ देखिए, ये तो फाइट्स दे रहे हैं, बहुत बार हम लोगों ने किल फीड के ऊपर नाम भी देखा है, बट शायद से इनके जो किल है वो दूसरी टीम्स चुपके चुपके चुरा रही हैं। वाइन ई-स्पोर्ट्स स्पॉट किया जाएगा उस प्लेयर को, मिसफिट्स इंटरनेशनल के प्लेयर को स्प्रे भी लिया जा सकता है शायद से। वो जो स्मोक है थोड़ा सस लग रहा है, थोड़ा सस्पिशियस लग सकता है वाइन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर को। और देखिए, एक वो जो कंपाउंड है मिसफिट्स इंटरनेशनल के प्लेयर्स ने वो गैदर कर रखा है, बहुत प्यारा कंपाउंड है। आइजल्स अपना काम बरकरार करते हुए कोई भी प्रेडिक्शंस मैं या फिर एज नहीं देना चाहेंगे, बट ऑडियंस अपनी प्रेडिक्शन जरूर देना कि इन 7 टीम में से कौन चिकन डिनर लेके जाएगा। जोन क्लोज हो रहा है 10 सेकंड में, सो 10 बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे बनाओ अपनी के, बट हमेशा याद रखेंगे वो क्लच को। बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं एजेंट 47 रूफ के ऊपर है। एज, दिस पोजीशन इज रियली शेडी, he is exposed from every angle. If he's going to get down, he's down and finished off. Definitely. I mean, that position is it's a high risk, high reward kind of situation at the moment. The risk just feels a little too much, so they have to be careful. Circle now collapses. We'll be looking at the positions coming in. It's just one. We're already into the circle in a really good position. We're down to the stage 6. 7 teams coming in. 20 players still alive. 22-minute mark about ahead. 20 seconds, and we'll see the stage 6 circle coming into play as zone collapses. These teams will be on the move, and Vika is already in the circle as well. Somehow managed to survive at the moment, but I think he's spotted and he's going to get taken down. There you have it. Tony Kabai will be the one putting the final nail in the coffin for the side of Team Flash. They go out in position number 7, but with 6 eliminations, that's still pretty decent. They are still going to be getting themselves up to 18 points on the overall. As also Ego Aries, they're still alive with 7 eliminations and 31 total points with 3 players standing. और रीगो 7 अच्छे एलिमिनेशन लिए जाएंगे। स्नेप 27 का खात्मा होता हुआ इस गेम के अंदर, पर ये जो 3 प्लेयर जिंदा हैं अपना पूरा ट्राई करेंगे इस चिकन डिनर को लेते हुए। भूखे शेरों के जैसे घूमते हैं हमारे अल्ट्रा ईगोस के प्लेयर्स। तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे जाएंगे अपने व्हीकल के अंदर। ग्लू ई-स्पोर्ट्स का एक जो प्लेयर है सामने से यहाँ पे क्रॉस भी किया, ही सेड हाय, ही वेंट अवे, एंड वो अपने कवर के पीछे चले जाएंगे। दैट वाज फनी टू वॉच ऑफ, बैट पंक ग्लू ई-स्पोर्ट्स के पीछे से वो भी जिंदा है। 19 प्लेयर हमारे पास में यहाँ पर रहेंगे, 6 की 6 टीम्स, 22 मिनट्स गेम, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी एलिमिनेशन नहीं आता हुआ। मिसफिट्स इंटरनेशनल क्या करने का ट्राई किया जा रहा है? 2 ही एलिमिनेशन रहेंगे, बट चारों के चारों प्लेयर अपनी डिफरेंट व्हीकल के साथ में रन डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड क्या कर रहे हैं? शायद से टीम्स या प्लेयर्स को स्पॉट करने का ट्राई किया जा रहा है। मिसफिट्स इंटरनेशनल एक डिफरेंट अप्रोच, पर देखिए ये गलती बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये चारों के चारों प्लेयर्स जो अपने व्हीकल के ऊपर घूम रहे थे वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। एक नॉकआउट यहाँ पे मिसफिट्स इंटरनेशनल के ऊपर आता हुआ, दूसरा भी यहाँ पे नॉकआउट आ जाएगा। गेम के अंदर इनकी बरकत नहीं बन रही है। एफवी यहाँ पे सोलोमन स्टैंडिंग रहेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं था। ये जो डिसीजन था अपनी गाड़ियों को घुमाना, ये गार्डन नहीं है, ये है एशिया बैटल रोयल्स चैप्टर 3। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आप लोगों को चिकन डिनर्स मिलते हैं और मुश्किल से आप टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आते हैं, और यहाँ से आप लोग ऐसे एलिमिनेट हुए, वो मेरे को सही नहीं लगा थोड़ा बहुत। One player still standing though for Misfit, so there is still a chance for them, and maybe, yeah, nah, maybe I spoke too soon again. Misfit International are gonna get taken down this time again. Glue, in terms of performance-wise, I mean, the last time they had 1 point. This time the field is standing in position 5. They're doing decent, but at the moment, all 3 guys are still alive. They are the ones that everyone's looking out for sure. Boyne with 4 players, 1 knocked down, but they're still alive. RIQ with 3, 52 Esports with 3 as well. Alter Egos, 2 players standing. As you're talking about 2 players standing to 1 player is standing tall. Let's see क्या होता है। And there we go, grenades आते हुए, retaliation आता हुआ। Ultra Ego का जो solo man standing है क्या कर पाएगा? But wait, Vine Esports और RQ, शायद से RQ अपने players को lose करते हुए, एक player अभी भी यहाँ पर जिंदा है, and YouTube को भी eliminate किया जाएगा। और there you go, 2 teams एक साथ यहाँ पे eliminate हुई, RQ और Team Vine Esports। यहाँ से इनका खात्मा, no, actually Vine Esports is still standing.
भाई स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर डाउन है और सोलोमन स्टैंडिंग रहेगा और टीम 52 के 2 प्लेयर यहाँ पे जिंदा हैं और बोलते ये चिकन डिनर कैसे हाथ से फिसल गया मुझे नहीं पता चला बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं टीम 52 स्टार्टिंग ऑफ रियली स्ट्रांग और दूसरा चिकन डिनर लेके जाएंगे क्या ही अच्छे और नजाकत से इन लोगों ने चिकन डिनर निकाला वाइन स्पोर्ट्स ने अपना हैंड लूज किया आरआरक्यू भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई और ईगोस के पास भी एक चांस था शायद से चिकन डिनर को लेने का बट एज there we have it man second match is in the hands of team 52 Yeah, pretty chaotic end towards the last zone there. We had a lot of teams, a lot of fights, taking place, and well, I mean, another team coming up. There are not a lot of eliminations, if I'm not wrong, but they will be getting those crucial 10 points, with the help of that chicken dinner. So, yeah, once again, teams at the top, the teams that were usually dominating, are still not having a great time. DRS did show up at 40 and with 8 eliminations. Yes, I mean, you probably would have expected a lot more coming in from them. All three Eagles at the moment are going to be the one consistently performing in terms of eliminations, and along with Team Flash, by the way. Do not take them lightly. They were dominant as well. And towards the last fights there, Voin, I thought maybe they had a really good chance of maybe closing things off here. That was not the case. 52 alter egos and Voin. There was also RRQ, if I'm not wrong, there in that fight. And RRQ, I mean, they usually take their time to kind of, have their footing into the game. And I feel like it is, once again, one of those situations. That's the case for sure, and we are done with the second match, ladies and gentlemen. I'm getting a call out, Edge. We are having 9,500 people watching us live right now on the channel of 141 Esports. So guys, please make sure to do and hit that like and subscribe button. अगर आप लोगों ने आज नहीं किया, so शायद से Edge और हम थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे. So please जाइए and hit that like. Yeah, we can do it. So please make sure to hit that like and subscribe button. But Edge, let's just have a look on the highlights because Hora Esports, they started off really strong in the region of Yasnaya. Rehost से पहले भी वो लोग eliminate हो चुके थे, but Hora Esports somewhere around losing the spot, and I guess Team Hong Kong as well. यहाँ से उन लोगों का जो elimination आया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, and Team Secrets ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला. I still am stuck on the fact. I'm being cringe. I know. I'm just making a fun factor. That's all. Oh god, I can't believe you actually said that. But yes, what a game this was. This move coming in from XMPL was pretty darn beautiful to watch. I absolutely love the performance coming in, and 40 getting taken down, but they counterpass on the same region side, and then immediately they also were taken down. All three areas, they've stepped up pretty big, and towards the last fight, you can see 52, I believe, 4, 5, 6 maybe. The eliminations that they have, it is 6 indeed at the end. 47 with 3 eliminations once again. 1 elimination for Yamil, and he had 2 eliminations coming into this one. Buddy 95, unfortunately, will not have anything to do in terms of contribution. Maybe some moral support coming in towards the end. But apart from that, in game, he did not, contribute anything, unfortunately, this game. 490 damage, though, from 47. Yamil on 208. 209 damage for IM. Great performance coming in from the side of 52 Esports. But here's the thing, even though they are the ones coming out on top of the winner, chicken dinner, MVP is probably going to be someone else, because 3 eliminations from AG 47 is the highest here. But I feel like there are other players. I kind of want to see what Vika did here again, because he was once again the last man standing for quite a bit. So let's see who is going to be the MVP for this map. Let's just have a look on the MVP, because 4 Thrives के IQQ लेंगे 5 elimination और बनेंगे MVP इस मैच के. 4 knockouts थे and 740 का damage उन्होंने लिया और 1 assist था. So a good match it was indeed for 4 Thrives IQQ. बहुत प्यारी performance थी, and we can see a top 4 players on our screens, because RRQ के Leaper भी पीछे से आते हुए second spot पे 4 eliminations के साथ में. Vika, as we're talking about, he was also taking 4 eliminations. But let's just have a look on the teams to watch out in the upcoming matches, because RRQ taking 9 eliminations, Wine taking 6, All Three Egos taking 8, and DRS. So ये जो 4 teams हैं इनके ऊपर बिल्कुल अपना spot बना के रखना पड़ेगा, और अगर इन लोगों से नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन हो सकता है. Edge, but teams to watch out are these top 4 teams. These are definitely some of the teams that you kind of need to keep an eye out for. But here's the thing, once again,
All 18 teams, I think you need to keep an eye out for. It's still not over yet. Maybe after 2 days, we will, come out to a conclusion where which teams are struggling, and which teams are having a good time. But at the moment, match summary, we had total eliminations 69, grenade eliminations 7, airdrops looted with 3, vehicle eliminations, unfortunately nothing this game, 6,207 healing done, and Team Secret Lolvu was the one with the longest elimination at 349 meters. Now, this was the match summary, but we all know what you guys are waiting for. The match rankings to see which team has accumulated what points, and then the overall standing to see what changes we will get to witness on that overall leaderboard. As we talk about match rankings, 53 Esports will secure the number 1 spot thanks to chicken dinner and 6 eliminations on total 16 points. RIQ with 14 points. Boyne did come in second, so they have that 6 placement points, bring the total up to 12. Alter Ego Aries got to be happy once again. I'm pretty sure 12 points, they'll take it. For Tribes, 8 points this time. Better performance than the game 1. Flash still stepping up with the eliminations in 7 points. Glub on 6 points as DRS. Great start, but unfortunately could not take it till the end. No position placement, just 5 elimination points. MSI with 4, ASI with 4, Team Secret with 4 as well, 2K with 3 points, Hora, HKG 2 points apiece, Yangon Galacticos, D Xavier 1 point, and Boom Alpha Gaming. Unfortunately, Boom, they had the chicken dinner last time. This time, no points whatsoever. Alpha Gaming, that's another game that turned out to be a blunder. Let's have a look on the overall rankings, because the first spot is conquered by the side of Alter Egos, taking 36 freaking points. A good match in the start, 24 points. Then second match they are conquering up with 12 more points, which was good. कर्शी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। कर्शी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। 6th will be Wine Esports, 2K will be 7th, Boom Esports will be taking 8, and 4th Tribes अभी के लिए, I mean they're on the first page, but Edge कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किल इनके लिए बढ़ती हुई। 4th Tribes अच्छा मैच नहीं गया, 8 एलिमिनेशन उन लोगों के पास में आए तो थे जरूर, एलिमिनेशंस का नंबर बहुत ज्यादा आया था, डोमिनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा था, बट 4th Tribes बहुत ही ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो गई, जिसकी वजह से उनके पास में सिर्फ और सिर्फ अभी 12 पॉइंट्स रहेंगे इन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स। जिसके बाद में हम लोग देखेंगे टीम्स जो हमारे दूसरे पेज पे रहेंगी, DRS Gaming, Team Secrets, Glue, Team The Xaviers, Misfits International, Hora, HKG, Young Galacticons, and Team Alpha Gaming. Somewhere around there dealing a really tough time, but it's just a start. We're having more matches and more days upcoming, so they can make a huge comeback from here for sure. They definitely can have a comeback. APG 3 points, Yangon 5 for HKG as well, Hora sitting on 6, and Misfits International, The Xavier 6 as well, 7 points for Glub, Team Secret on 9, DRS on 10. We will wait and see what the points are going to look like at the end of the day. That is what matters. Right. Starting, it is still looking grim for these teams at the bottom. A couple of teams that had a really good start are going to be Alter Ego Aries, especially and Flash. So, moving on further, hoping to see some difference in action here on the map of Miramar, as we will, this is the last map in the rotation, and after that, we will have the cycle repeat itself. We will have Ronda Wrangle, Miramar again. But since Miramar, we're getting to see it the first time between the mixture of all these groups, it's going to be interesting to see, how things turn out here. Biggest map out there. As we take a look at the overall MVP as well, we will see some new faces all together. Lapper on 6 eliminations at the moment. Number 1 spot, K2 on the side of ASI 8. He was the last man standing twice now for the side of ASI 8. Bunny on the side of Alter Ego with 7 eliminations. Snape stepping up as well. 6 eliminations. He's on 4th position. And IQQ, a familiar face, on 5th position with 6 eliminations as well. Yeah, these are the overall MVPs, and K2, IQQ, Snape, Barney 5 and Leaper. Good performance coming in from the start itself. A great one. These are the overall MVPs right now, but let's just see into the end days. We can see more players and teams maybe joining here as well. But right now, Alter Egos, ASI8, 4th Tribes and RQ, the players are joining the spot of the overall MVP. Edge, this is it, man. We'll be having a look on the map rotation itself, but Edge, we are done with 2 matches on day number 1 of finals. This is just phase 1. After this, we'll be having a look on the phase 2 as well. But ladies and gentlemen, this is it, guys.
इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना तीसरा मैच जो रहेगा मीरामार का, मेरा पर्सनल फेवरेट मैप। And do let me know आप लोगों का क्या पर्सनल फेवरेट है, but let's just have a look on the team votes right now क्योंकि DRS के fans and 4 Thrives के fans are just totally dominating. 4 Thrives they're having 7,500 votes, DRS having 6,300 votes, ASI8 और esports Jungle Galacticons पीछे से वो भी धीरे धीरे कवर अप जरूर कर लेंगे। But guys, if you guys are wondering ये exactly है क्या and vote हम लोगों को क्यों करना है, you guys can just vote for your favorite team right now. These are the finals, ये तो हमारी top teams हैं ही, but still you guys can vote. It's a feature right now provided to you all to see the sports fans are giving or not. Vote करने का sequence या process क्या है? It's really easy guys. All you have to do is just type a hashtag and then if you guys want to vote for Thrives then type the team tag. So पहले hashtag then 4 Thrives का tag जो है 40. Maybe if you guys want to vote DRS, so hashtag पहले and then DRS का tag जो है DRS. ASI8 is the same process for all the upcoming teams. So please do vote for your teams and अपनी teams को support दिखाते रहिए। ये तो हमारा दूसरा मैच है। इसके बाद हम लोग witness करेंगे मीरामार। Yep, we will be, the voting is for the fans and the support coming in. So we also know which team is being rooted for at the moment in the chat. It's 4 Tribes and DRS as you said, and Miramar coming in. A lot of expectations coming up once again for a lot of these teams coming up. 4 Tribes and DRS, with the eyes are going to be on them yet again as a fan favorite teams, and 5 eliminations for DRS if I'm not wrong, and 8 for 4 Tribes into this one. Let's see if they can get the same at least, if not better, going into the next matches. Because the first game was kind of a disaster for both of these teams. And 40 are still not picking up the pace that they're kind of expected to. But at the same time, I can also say this. I mean, after their first day's performance, like with the 3 chicken dinners, I think we are expecting... I think we're just setting up the bar too high for them. They definitely have the potential for it, but at the same time, you also need to understand the caliber of other players that are in the lobby. We have players like Alpha Gaming, Alter Ego, Aries, Flash. I mean, teams that have absolutely dominated in PMGC. I mean, there's a lot of momentum coming in as well. And the side of RQ, who are looking for redemption, Hong Kong team, they are trying to, make a mark for themselves as the only team from the region. It's not easy, let me tell you. Being the only team from a different region, you're not just carrying the weight of the pressure of the grand finals, you're also carrying the weight of the nation, representing the entire country all by yourself. That is big. So I kind of am hoping to see HKZ's performance boost up, but we will have to wait and watch, because on map of Rondo and Erangel, that was not the case. It was boom with the chicken dinner on the map of Rondo, and boom went boom on Erangel, and it was 52 who came out on top. We will see if Miramar is going to be a different story for the teams at the bottom, as we will be taking a flight yet again here on day number 1 of the grand finals, match number 3. Miramar it is, and we will be flying up from La Trella to a truck stop. Let's see, starting off strong from the region of Ladrella and ending in the region of Truck Spot. Dekhte hai Picado being the heart of the map and Los Leones being the biggest city of the map, and Hasadin and Petron being those luxurious compounds or villa, whatever you guys want to call it off. But हम लोगों को पता है that 4 Thrives and एक और team वहाँ पे जरूर कूदती है. I have seen team already was maybe joining in the region of Picado if I'm not wrong. I might be wrong, so please let's see. Picado पे हम लोग को ये जो 2 teams है fight लेती हुई देखने को मिलेंगी या फिर नहीं, but Los Leones में भी हम लोगों ने देखा है ये जो 4v4 fights है बहुत ज़्यादा होती है. But हो रहा है esports और अपने डिसाइड लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और HKG ये फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है नेशनल के अगेंस्ट मॉन्टेनोवो के रीजन में. ये जो पहली 4v4 फाइट है ये स्टार्ट हो चुकी है. कुछ डिसाइसिव डिसीजन जरूर आएंगे मिस्टर इंटरनेशनल की तरफ से. पहला नॉकआउट तो आ चुका है मिस्टर इंटरनेशनल के ऊपर, दूसरा भी आ चुका है क्योंकि टोनी इज डाउन टू हिज नीज एंड एक और नॉकआउट एंड फिनिश ऑफ आता हुआ पहले ही कुछ चंद लम्हों के अंदर हम लोगों ने देखा मिस्टर इंटरनेशनल अपने 2 प्लेयर्स को खो बैठे हैं. अब इस वक्त इंटरनेशनल ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्योंकि टीम हांगकांग को आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, बट वेट ये लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. रिटेलिएशन आता हुआ उसी से क्लोज रेंज के अंदर फाइट आती हुई है. देयर वी हैव इट, क्लॉडी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे. देयर वी गो. मिस्टर इंटरनेशनल का वो सोलोमन स्टैंडिंग क्या 1v4 कर पाएगा, एंड हालांकि वो चीज़ नहीं रहेगी एंड दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन. ये लम्हे में मिस्टर इंटरनेशनल पहली टीम रही जो एलिमिनेट हो चुकी है इस 4v4 फाइट में मॉन्टेनोवो में.
I was talking about HKG stepping up, and well, gotta say, 2 minutes in, and they've already got themselves 4 points. Great start. I mean, I don't think you could have asked for a better start to the game than this. Eliminating one of the top teams as well. Mr. International, we all know how scary they can be. And HKG, they will be feeling confident now. They're down to 17 teams already, and yeah, Miramar turning out to be a bloodbath instantly. The Yangon Galacticos, they've lost one player, Xavier. They will probably look to get more. One is not good enough for them. They probably need a lot more coming into this one, and they need a good start as well. We saw what happened to them in the playoffs. They kind of fell off. Grand finals is a different story. Let's see if there's going to be a different outcome at the end. At the moment, Boom feels like they might take the fight against Glue. Boom esports, all the 4 players standing tall. Close range encounter की फाइट ये जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रही है. ग्लूमैटिक धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेते हुए और अपनी टीम के साथ में रियूनियन करने का जरूर ट्राई करेंगे. देखते हैं क्या कहर मचता है इस यूएमपी का, क्योंकि यंगन गैलेक्टिकोस ओके सो एच धीरे धीरे ये जो टीम्स हैं फाइट लेती हूँ. द ज़ेवियर्स की भी यहाँ पे फाइट इनिशिएट हो चुकी है. बूम स्पोर्ट्स की फाइट यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी है. देखिए टीम ब्लू वर्सेस टीम बूम स्पोर्ट्स. यमी ने पहला नॉकआउट यहाँ पे निकाला जाएगा. दूसरा नॉकआउट की तरफ यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे. स्कारल है हाथ को के अंदर, बहुत ही प्यारे प्लेयर है बट अभी बहुत ज्यादा लो रहेंगे और यहाँ से एक डायरेक्ट पीक आएगा और बैरल या फ्रेम 762 से एक बहुत ही ज्यादा प्यारा नॉकआउट उन लोगों को अपने ढेर किया जाएगा धीरे धीरे. बूम स्पोर्ट्स रेस बॉब रिटालिएट ये भी कर रहे हैं. रिटालिएशन फायर के अंदर रेस बॉब ने एक प्यारा नॉकआउट भी निकाला. There you go Edge. The grenades are going to get pinned off really soon. Boom Esports, they are feeling the wrath of the glue as well. Feeling really confident and dominant as well. Looks like they might take down Boom yet again. But Glue also feeling the heat. Not done yet. And Res Bob is going to get taken down as well. Okay, Glue, Karbu will be the one. Now in a 1v1 situation, Maul will be the one coming out on top. But here's the thing. Glue, they managed to get 3 before going down. And there's going to be Yangon feeling the heat as well. Hope's going to get taken out. Romeo is the only one standing right now. Well, he's in a position where he probably will get taken out as well, because it's not just Xavier that he has to worry about, but also Sleepy. And I'm pretty sure Sleepy has already given out his position, but also has hurt Romeo. Not an easy position to be in, but Sleepy is out in the open. Will be taking a lot of damage, and that jump will slow him down, but Romeo has already moved down to a different position. That is why, wait a second, why? How is this role reversal working for him? Oh my god! Unfortunate for Sleepy Horror. But Romeo, that was a very good. It felt like a Uno reverse there. And with or maybe Tom and Jerry chase coming in. Maybe Tom and Jerry chase. But oh my god. I mean, funny moments, right? But that fight wasn't funny for Young Galacticos. I mean, they're having good positioning. But Young Galacticos, they're surviving with a single Solomon standing for our esports. एक player को उन लोगों ने lose तो जरूर कर दिया है. We are down to our top 16 teams. Let's see. इस वाले chicken dinner को कौन लेके जाएगा? And it's all about the patience, right? Beat in game, beat in real life. आप सभी लोगों को patience जरूर रखना चाहिए. But Edge, there you have it. I mean, that's a loot coming in. Do you know what that truck is? I mean, it gives loot to the players if they burst around. But that's a new feature coming in. I never saw that in my game. I don't know why. But when we're going to be playing today PUBGMOBILE, so maybe we can have a look on that. But DRS, पिछला गेम इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था. And especially XMPLZ ने जिस तरीके से नॉकआउट्स निकाले थे, अपनी टीम को सोलो सिंगल हैंडली कैरी करने का ट्राई कर रहे थे, बट चिकन डिनर नहीं आ पाया. बट DRS जो गलतियां पिछले मैच के अंदर कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी, स्ट्रैटेजीज के ऊपर ये जो गेम है IGL खेलेगा और पूरे के पूरे प्लेयर्स खेलेंगे. बट अभी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे टीम 4 थ्राइव्स आसपास के रडार या फिर प्रॉक्सिमिटी में कोई भी टीम नहीं है. T24 on the screens and 4 thrives, very versatile team. Let's see Edge, can they actually pull the chicken dinner off? It's gonna be easy, but definitely a chance for them. Also, Vigo this time did not get any points whatsoever at the start. Flash also just chilling
40, another team that we were expecting to go berserk right off the bat, will not be doing so. They're holding on to their players at the moment with no eliminations coming in. 7 minutes into the game, 56 players still alive. Ramar, Ladriela is where Falak is. I mean, everyone is, to be really honest, but they're little split up, not that far away. They're split enough to, scout for any engagements. They're also split enough just to go for those, trades, that cover fire that can come into play. 4 drives बहुत ही ज़्यादा बड़ा और लंबा स्प्लिट है टीम्स के बीच में और प्लेयर्स के बीच में. क्या आईजीएल के कॉल आउट्स है, क्या यहाँ पर करना चाह रहे हैं 4 थ्राइव्स, अभी के लिए देखना पड़ेगा. बट डीआरएस कोई भी यहाँ पे ना रोटेशन क्लैशेस, ना ही कोई यहाँ पे फाइट स्टार्ट हुई है अभी के लिए. 2 टीम्स तो यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मिसफिट्स इंटरनेशनल और टीम ग्लू ब्लग ई स्पोर्ट्स. दोनों के दोनों टीम एलिमिनेट हो चुके हैं. और लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द मिनी मैप एज वेल ऑडियंस, कॉज अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जो है वो जोन के अंदर तो आ चुकी हैं. और एक हम लोगों ने हार्ड शिफ्ट ज़रूर देखा था, फ्लाइट पाथ जिस तरीके से जा रहा था, और एक हार्ड शिफ्ट लिया अल्फा गेमिंग, बूम ई स्पोर्ट्स, टीम आरक्यू. एक बहुत ज़्यादा लंबा रोटेशन करना पड़ेगा जोन के अंदर. टीम 52 हालांकि जोन के अंदर आ चुकी है और एडवांटेज ज़रूर लेंगे, एक्सेप्ट कि एलजेड यूज़ करेंगे उस डीएमआर का 8x के साथ में ओवन टैप्स देते हुए. I mean, most of the time we have seen all the players using those UMP or maybe assault rifle or shotguns. But now finally we can see all the players wielding those DMR with the 8x. It's nostalgic to see. SKG feeling good with the position that they have on the overall end on the map as well. 2K might be in a bit of a trouble if they don't account for this player. Looks like Genius is taking the damage. Randara now closing in the gap and HKG, as there will be retaliation on the side of HKG. Sundar's already open. He doesn't have to go for the reload there. I'm sorry. As Y drops Hulk 2K. The revival is not going to be easy, and he will go for the heal immediately. So SKG now with the upper hand. But for how long? The grenade. मेरे को लग तो रहा था शायद से वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा. डैमेज यहाँ पे थोड़ा बहुत लिया है डेली बॉय फ्रॉम 2K. ये जो ग्रेनेड है ये बिल्कुल नॉकआउट लेगा. आई गेस नॉकआउट ले भी लिया है. नो, ही वाज रियली लोड. द एचपी जीनियस हांगकांग टीम की तरफ से वो डाउन हो जाएंगे और डोमिनेशन आता हुआ हांगकांग के वाई की तरफ से. व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस थ्रू द डे. बट अभी हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रा ईगो के बानी 5 ने एक नॉकआउट निकाला है साइक्लोन के ऊपर. अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी तो थी डीआरएस गेमिंग ने पिछले मैच के अंदर. एंड थ्रू आउट द डे, आई मीन 2 ही मैचेस तो हुए हैं, पूरा दिन तो खत्म नहीं हुआ है. बट एज लोगों ने देखा था डीआरएस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 मैचेस के अंदर. हालांकि चिकन डिनर नहीं आ पाया, बट कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी दे वर वर्क, आई मीन इट वाज वर्किंग फॉर देम. 2K esports एक प्लेयर हल्क 2K डाउन हो चुके हैं. एक ही एलिमिनेशन उनके पास रहेगा. रिवाइवल यहाँ पे अभी तक आ नहीं पाया है. एंड द लूजिंग प्लेयर स्लोली एंड स्टडीली. बट टीम हांगकांग पीछे से वो भी यहाँ पे उनके ऊपर स्पॉट रखेंगे. एंड वाइन ई स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर रही है. सो विसिनिटी के अंदर बहुत सारी टीम है एंड इट्स गोना बी कमिंग अप विद दैट थर्ड पार्टी सिनेरियो रियली सून. थर्ड पार्टी से बच के रहना पड़ेगा टीम 2K esports को. Definitely. I mean, getting third party in a situation like this is probably the last thing they want. And one would absolutely love to take the fight if it actually breaks out between these 2 teams. Is that Voxy or Potato? It's one of them holding on there. There is another fight happening on the other part of the map. It's DRS and Alter. Is it Alter? I think it is Alter. It is Alter Ego Ares at the moment, but we will take a look at that in a bit. As HKG 2K Voin still in a standoff, a 3-way split. No one's really getting any action done at the moment. DRS, they drop 1. XMP is the only one standing. Badru is the only one on the side of all 3 areas, and he will be the one coming out on top. DRS Gaming, unfortunate again, as they will get taken down. Snape will be eliminated, but I believe the other 2 players on the side of all 3 areas, they will be back on their feet thanks to Badru. And now with 4 eliminations, all 3 areas are picking up the pace, picking up where they left off in terms of eliminations.
Indeed, that's the case. RQ एक ही एलिमिनेशन है अभी तक, ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे इन लोग पास मिले नहीं हैं। शायद से एक थोड़ा बहुत स्लो धीमा धीमा गेम ज़रूर खेलना चाहते हैं टीम RQ। पिछले ही मैच के अंदर उनके शायद से टॉप 3 आए थे या टॉप 5 आए थे, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। बट RQ दे हैड अ गुड रन इनटू द प्रीवियस वन। बट जैसे ही हम बात कर रहे हैं, जैसे ही हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक और टीम यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। HKG यहाँ से जा चुकी है। ये अच्छा मौका था HKG के लिए चिकन डिनर निकालने के लिए, बट दे गॉट एलिमिनेटेड वे टू अर्ली एंड वी आर डाउन टू आवर टॉप 14 टीम्स। एंड देखते हैं हमारी टॉप 14 टीम में से कौन लेगा इस तीसरे मैच का खिताब। बट अल्टर ईगो एरीज बानी 5 बहुत प्यारा परफॉर्म किया था पिछले मैच के अंदर एंड थ्रू आउट द होल फेज 1। एंड यंगन गैलेक्टिकॉन टीम सीक्रेट्स, भाई कुछ भी बोलो, ये जो दोनों टीमें हमेशा फाइट लेती हैं, ये जो दोनों के दोनों 4 या फिर 8 प्लेयर्स हैं, यंगन गैलेक्टिकॉन और टीम सीक्रेट के, मैंने देखा है हमेशा एक दूसरे से इन लोगों की टकराव हुई है। और एक दूसरे से अगर लड़े हैं तो कभी खत्म करके ही लड़े, कभी पीछे एक दूसरे से हटे नहीं है। यंगन गैलेक्टिकॉन्स और यंगन टीम सीक्रेट दोनों की गन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अल्फा गेमिंग 2K से यहाँ पे कुछ फायर्स तो आए थे, बट अभी तक यहाँ पे कोई नॉकआउट नहीं आ पाया है। Yangon. That one player standing for how long is the question. Alpha Gaming as well. This time, again, they are surviving up until now, the two surviving players, but they don't have any points to work with. And feels like 2K might be the one putting the screws to them yet again. The Alpha Gaming, if they go down without any points, this will be a disaster. Another one that they will not be willing to take. Sondara will be able to get into safety. He might be able to survive this, but Tops is out there from the wrong range. Will be trying to get more frags as Young Gone Galacticos, the last surviving player, Romeo, was found by one Young on the side of Xavier. There goes distance. And Xavier with 4 eliminations. Young Gone Galacticos, they're gone with just 3 eliminations, 7 points overall. RIQ on the move. Progos with 2 points for himself. Domination by one Young. Exactly. जिन फोर्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं उनका भी खात्मा हो चुका है, और ये मोलोटॉव कनेक्ट जरूर करेगी। एंड टीम 52 2 प्लेयर्स को यहाँ पे लीड पर डाउन करेंगे। ये है हमारे MVP अभी ओवरऑल के अंदर, और 5 MVPs में इनका नाम तो खिताब आ चुका है। बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं टीम RRQ 2 प्लेयर यहाँ पे जिंदा रहेंगे। यूट्यूब कॉम यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, शायद से एक 1v3 हो सकता है। एज ये जो ग्रेनेड है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। नाइ केस वो जो प्लेयर है बहुत ज्यादा लो है HP के ऊपर, 45 इज रियली लो विद HP। एंड अभी यहाँ पे शायद से क्लोजिंग किया जाएगा, डिस्टेंस को एक 1v3 जरूर आने वाला है। UMP से यहाँ पे कहर मचता हुआ है। दे यू गो, यहाँ पर एक 1v3 होता हुआ, और यहाँ पे हमारी टीम 52 ESP एलिमिनेट हो चुकी है। RRQ एंड स्पेशली लीपर, क्या ही भयंकर परफॉर्मेंस थी। एंड यूट्यूब कॉम का जो रिवाइवल है वो भी इजीली हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू फस अबाउट। एंड SI8 ऑन द स्क्रीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी 0 एलिमिनेशंस हैं, कोई भी यहाँ पे फाइट नहीं मिली है, और 4 थ्राइव्स भी। तो दोनों पाकिस्तानी टीम्स स्ट्रैटेजी के अंदर शायद से कुछ चेंजेस आते हुए, और शायद लग रहा है एक स्लो और धीरे धीरे पेस के अंदर अपने स्पीड को बदला गया है। SI8 और 4 थ्राइव्स किल फीड के अंदर कोई भी नाम नहीं आया अभी तक, बट देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या ये दोनों टीम चिकन डिनर ले पाती है या नहीं। That's what everyone's hoping for, the chicken dinner at the end. Those 10 points will be very, very crucial. Alter Ego still on the top of the charts with 3 players alive. Badru taking a bit of damage there. They have to be, safe at the moment, I'm pretty sure. I thought for a second they might be going for that airdrop. But, I mean, he's thinking, is he? I think Bunny is probably thinking to go for it. Using the smoke to cover his position and checking if there's anyone else. Maybe potentially going for the airdrop, because I think that airdrop will actually help them a lot. And they of the players inside of ASI8 are kind of stuck in the same area there. Mountain Mebo is where Alter Ego's areas are posted, and ASI8, their position's compromised, but they're not gonna go for a fight just yet. Team Secret, on the other hand,
They might be taking the brawl against the Xavier. One player is down already on his knees and he might get taken out. There it is. Russell's gone. The Xavier now feeling the heat. There's only one player standing. 5 eliminations. But will this player survive the fight? That's going to be the case right now. Team Secrets दो अच्छे एलिमिनेशन लुक पास में आ जाएंगे. मोलोटोव्स और स्पैम आउट करने का ट्राई कर रहे हैं. ये कौन सा एक सोलमैन स्टैंडिंग है जो जिंदा है और अभी भी अपनी टीम को यहाँ पे सर्वाइव करवाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं. लेट्स सी गाइस, क्या यहाँ पर टीम सीक्रेट एलिमिनेट करेगी द ज़ेवियर्स को? नहीं, द ज़ेवियर टीम सीक्रेट का जाता हुआ वो जो सोलमैन स्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखता हुआ हमारी टीम सीक्रेट को. एक ही प्लेयर डाउन हुआ बट दो प्लेयर अभी भी बचे हैं. ये जो ग्रेनेड है शायद कनेक्ट करेगा एंड देयर वी हैव द कनेक्शन इज देयर. PMG will be taking the final blow and the Xaviers यहाँ से एलिमिनेट होती हुई. बहुत प्यारा परफॉर्मेंस, धीरे धीरे गेम के अंदर बरकत करेंगे. बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द फोर्थ राइज एंड देयर वी हैव इट. IQQ कैमल के ऊपर सवारी करते हुए एंड इट लुक्स फनी टू सी जिस तरीके से ये कैमल चलता है. द ग्राफिक्स, ओह मैन, the camel is fast, man. And ऐसे घुमा क्यों रहे हैं? What do you want to do? IQQ, you can get shot at. और जिस तरीके से ये अपने कैमल को घुमा रहे हैं IQQ, ये क्या मस्ती चल रही है. गाड़ी में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, but still that looks funny to see. Definitely. I mean, that is what we've talked about the other day as well. Yeah. And was funny to look at. It was fun to watch. It is definitely fun to ride as well. But as we talk about the game, once again, 11 teams now, 29 players in the server, 19-minute mark about ahead, stage 5 circle, and now the rotations are going to be coming in clutch. We've talked about this last time. The Agile now has a lot of weight on his shoulder, as they will have to predict the perfect rotation, predict where the zone is going to be going in. But in the meanwhile, I thought maybe Alpha Gaming might get a couple more finishes there, but no. They will get one and that's about it. Immediately taken out, down to top 10 teams now. फलक देखा है जिस तरीके से अपनी M416 के बर्स्ट दिखाते हैं एंड फलक अभी तक, I mean I have seen his montages and जिस तरीके से फलक वो M416 को wield करते हैं और बर्स्ट करते हैं वो बहुत इंसेन है. We can see some of the most satisfaction shots coming in maybe, but फलक अभी के लिए यहाँ पर उस बूम स्पोर्ट्स के सिंगल प्लेयर को पिन करते हुए एंड पिंच करेंगे एंड ही विल जस्ट फोर्स हिम टू स्टे इन दैट कंपाउंड. बट अभी के लिए बूम स्पोर्ट्स का प्लेयर जो है वो एक अच्छे सेफ एरिया के अंदर है. टीम सीक्रेट का एक जो खिलाड़ी है वो डाउन तो हो चुका है बट टीम 4 थ्राइव्स, ये क्या यहाँ पर अभी इन लोगों की स्ट्रैटेजी है? कोर्स 4 थ्राइव्स के तीनों या फिर चारों के चारों प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा बड़े लंबे स्प्लिट के अंदर रहेंगे. यार 4 थ्राइव्स यहाँ पे फाइट लेने आ चुकी है टीम फ्लैश के अगेंस्ट. फ्लैश के यहाँ पर 2 प्लेयर अभी तक है. वीका तो शायद से फाइनलाइजेशन आ तो चुका है. फ्लैश के 2 ही प्लेयर्स जिंदा रहेंगे बट लेट्स जस्ट सी क्या यहाँ पे क्लच आ सकता है या फिर नहीं. टीम 4 थ्राइव्स ये चारों के चारों शेयर शायद से पुश करेंगे बट एक शेयर तो उस कैमल की सवारी करता रहेगा. उस ऊंट से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं और डायरेक्टली शायद से पुश इन करेंगे. यस IQQ T24 और फलक घात लगा के बैठे हुए ज़्यूस के ऊपर. ग्रेनेड डीबीएस के अंदर स्विच किया जाएगा, नॉकआउट में भी आ सकता है. रियली लो टू द एचपी एंड देयर वी हैव इट. पीछे से IQQ का जवाबी हमला भी आता हुआ बहुत प्यारे तरीके से फलक ने वो नॉकआउट को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा. बोस बीइंग द सोलोमन स्टैंडिंग. टीम फ्लैश यहाँ पे अच्छे सिचुएशंस के अंदर नहीं है. 4 थ्राइव्स के IQQ ने स्पॉट किए. SYED के प्लेयर्स को भी एक और ग्रेनेड यहाँ पे जाता हुआ. फलक थोड़े से ओपन के अंदर जाएंगे. पीछे से जवाबी हमला क्रिप्टो का भी आएगा और जो मिनी 14 के शॉट्स हैं बहुत ज्यादा कारीगर. फलक को रिवाइवल तो हो जाएगा बट वो जो बोस का ग्रेनेड आ रहा है that might actually work off something for this team. Gotta be careful. There's only one man standing on the side of Flash and 40. Well, they might be the one coming on top, especially because of the numbers advantage. And Flash, I mean, both, as you said, the grenade had to land, but now it's not over yet. But 40, oh my God, yes, he has eliminated in the blink of an eye. Bose, beautiful play with the AUG now. Will be making 40 pay at least with one player. They will get the trade. Can they get more? Can he get more? Flash with one. That was the first elimination, by the way, for him coming in. And that grenade will not be dealing any damage. He's safe still at the moment. 4 players standing at the end. They will probably close in the distance and they will have to go for this fight as they have to make their way into the circle in the next few seconds. There are other teams in the vicinity, but they're kind of far away and they don't want to engage. They don't really want to engage into this one. There's 2T. I can see maybe Boom somewhere around there. Maul, I believe that is the only one standing.
so he probably will not be wanting to take the fight anytime soon. T24 took a chunk of damage, and the grenade once again decent, but not in the right spot. Both alive at the moment. As 40, they will have to come out, so they will have to be ready for the trade here, because both will take the shot when the time is right. ओह T24 वो जो ग्रेनेड था बहुत प्यारा ग्रेनेड था, लो कर दिया जाएगा. यूटिलिटीज एग्जॉस्ट हो रही है. फोर्थ राइव्स को जोन के अंदर भी जाना है, 70 मीटर दूर है जोन से, और ये जो दबदबा कायम करने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट अभी के लिए जोन को भी प्रायोरिटी दे देनी पड़ेगी. बट ये जो तीन प्लेयर्स हैं, IQ, T24 और फलक, क्वेश्चन करेंगे. फलक अपनी यहाँ पे यूएमपी से सूचन करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए. बोस ये जो सिंगल मैन प्लेयर है टीम T24 को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता हुआ, और कब इनका एलिमिनेशन आएगा देखने वाली चीज रहेगी. या फिर हो सकता है बोस एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी करें, एंड दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन. कहते कहते ही यहाँ पर एक और टीम एलिमिनेट हो चुकी है, और ये है हमारी टीम फ्लैश. और टीम 4 थ्राइव्स का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, और शायद से फलक वो दोबारा से ऊँट पकड़ेंगे. और क्या वो ऊँट, आई मीन दे नॉट गोना बी लीविंग दैट कैमल, दे लव इट. बट 4 थ्राइव्स अभी के लिए बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिखाती हुई. बट लेट्स जस्ट डाइवर्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स अदर टीम एज वेल, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये जो फाइट है 2K की, एक और टीम के अगेंस्ट इनिशिएट हो चुकी है. आज दबदबा कायम रहेगा इस टीम का भी. बट 2K esports बूम esports का वो जो सिंगल मैन स्टैंडिंग है, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर चिकन डिनर लिया तो था वो पैसिव अप्रोच के साथ, पर शायद से वो काम नहीं कर रहा है, वो कारीगर नहीं रहेगा. कंसिस्टेंसी बना के रहना चाहते हैं. S12K का कहर मच सकता है. सोनारा 2K S12K से शायद से रशियन जरूर कर सकते हैं, स्लैम में डाल सकते हैं, बट पेशेंस इज द की. Patience is definitely the key. They tired 14, got a bit pissed about this fight for a really long time now, and finally this is turning out to be a bloodbath between 40 and SI8. IQQ the only one standing right now with 3 eliminations out of 40. They can get taken out, and IQQ realizes that, so he's going for those finishes immediately. Really want to confirm any of those frags. Well, guess what? It's 2K actually joining the fight, third partying this, and getting a free B onto one of the players on the side of 40. Yes, I believe he's gone already. So now IQQ is allowed to do. Maul, the only one standing outside of Boom, has to be careful as well. He's in the top 8. Would love to survive a little longer. OT will also be left with one player. ASI have 2 on the feet already. They might go for the revival, or maybe not. K2 barely surviving. IQQ holding on. इनके पास स्मोक जरूर थे. फलक के लिए अगर एक स्मोक हो जाता तो शायद से रिवाइव जो है वो वहां पर बन सकता था, और फिर 4 थ्राइव्स धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ तो सकती थी. 4 थ्राइव्स अभी के लिए यहाँ पर ASI8 esports की तरफ से ये जो फाइट है उन्हें जीती, और 4 थ्राइव्स अभी के लिए यहाँ पर थोड़े सा टफ टाइम डील करते हुए. IQQ being the sole man survivor, ASI8 हालांकि उन्होंने भी बहुत प्यारा खेला, एंड जवाबी हमला टीम 4 थ्राइव्स के ऊपर भी आएगा. दोनों ही टीम हालांकि पाकिस्तान से जरूर हैं, बट ASI8 और 4 थ्राइव्स पूरा यहाँ पर डोमिनेंस वो भी बताने का ट्राई करेंगे. जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने मचा रखा है रुकने का नाम नहीं लेगा. ASI8 और 4 थ्राइव्स हालांकि दोनों के दोनों पाकिस्तानी टीम जोन से बाहर है, तो जोन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बट इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईगो एरीज उन्होंने स्पॉट किया ASID esports को. सो एज आई गेस a problematic situation coming in for both of the Pakistani teams. They are pushed and pinched out of the zone. Both those Pakistan teams are feeling the heat, and it's not over yet. It's a 1v2 situation between 4 tribes and ASI8. They're slowly making their way into the circle, as the C7 circle will come into play in the next minute or so. IQQ would love to have a couple more points before he actually went down there. I mean, the position points will be accounted for if he gets taken down even now, but you probably want to stay up, maybe top 5, top 6 maybe, as a solo man surviving. Those smokes will be deployed too that he has, but the grenade is going to be cooked up. Will that be on point? Maul actually gets it, and Panther feels like he will be. No, IQQ will not be the one getting it. It's going to be Maul from the side of Boom, who will get himself an extra point, thanks to the help coming in from IQQ, of course, but Rampage coming in from all. I mean, we were talking about him not contributing usually, not contributing to that one game, right? If I'm not wrong, but this time, it feels like he's the only one, and he's carrying the entire weight on the shoulder of his team. Yeah, Boom esports Mall especially, you've been analyzing the player throughout the whole game, and Boom esports as well. काफी silently खेलने का try कर रहे हैं, and
स्ट्रक्चर आएगा और जोन के अंदर जाने का पूरा ट्राई करेंगे। IQQ को स्पॉट करने की दरकार रहेगी, बट ये जो स्मोक से बहुत ज्यादा कारगर रह सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे जोन के अंदर जाएंगे, अपने लिए स्मोक भी किया जाएगा उस ग्रेनेड गन के थ्रू। बट बूम स्पोर्ट्स के मॉल क्या यहाँ पर आगे की तरफ डिसीजन रहेंगे, बट देख सकते हैं फोर्थ राइव्स का वो जो प्लेयर है और SYED स्पोर्ट्स प्रीतम, वो दोनों ही प्लेयर्स वहां पे शायद से उन लोगों की भिड़ंत बहुत जल्दी हो सकती है। एंड 2K वाइन स्पोर्ट्स एज एवरी टीम, हर एक लोग यहाँ पे पुश आउट कर रहे हैं उस टीम को। 2K स्पोर्ट्स वाइन स्पोर्ट्स, जो फाइट है बहुत जल्दी इनिशिएट हो सकती है। Zone is also shrinking in 20 seconds. 8वें जोन पे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 8 टीम जिंदा है। मैंने अभी तक इतना ज्यादा chaotic मिरामार नहीं देखा है एशिया बैटल वर्ल्ड चैप्टर 3 के अंदर। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे विनर चिकन डिनर लेके जाएगी। 8 की 8 टीम जिंदा है और 8वां जोन है ये अभी तक। 27 मिनट हमारे यहाँ पे पूरे हो चुके हैं इस मैच के अंदर। देखते हैं कौन जीत के जाएगा इस मैच को। We can see right now 2K के पास भी यहाँ पे 3 लोग जिंदा रहेंगे, बट वाइन स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी जिंदा, और ये शायद से वाइन स्पोर्ट्स का चिकन डिनर हो सकता है। Can actually be the case, but boom, finally will lose the player there, and Maul gets taken down. 6 elimination with the side of Boom. They'll be up to 20 points. Their side, Preetham also gets taken down. 40 somehow managed to out-survive them. At the moment, up to 6th position. At least, by the way. And JK, oh, grenade is good on the side of all three. They're taking up 2 players next to those grenades. Lolbu, the only one standing right now, will be dealing a lot of damage onto one of the players, but it's not over yet. All 3 guys, 2 players still surviving. They might go for the revival onto JK. Or maybe not. He's actually not going for the revival. He's actually going in closer. And Lolbu try to see if he can get more points here as 40 and RQ. Both of them are going to be eliminated pretty early in the last fight. Lolbu, VSLK up close and personal, will be getting taken down. Team Secret gone. Another team. We're down to the top 3 teams, ladies and gentlemen. Alter Ego once again the top 3. One with 4 players. 2K with 3. Alter Ego with 2. And as you said, Inferno, Point are probably looking like the favorites to take home the chicken dinner here with 4 players standing. The man advantage is clearly in their favor. Indeed, 2K esports 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स हम लोग के पास आ जाएंगे। वो ग्रेनेड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डैमेज लिया भी जाएगा। वॉक्सी 5 को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। 2K रिटेलिएट करते हुए 3 की 3 टीम जिंदा तो रहेंगी। अल्ट्रा ईगो 2K एंड वाइन ई-स्पोर्ट्स, ये जो चिकन डिनर है शायद से वाइन ई-स्पोर्ट्स से थोड़ा बहुत फिसलता हुआ, बट नो, दैट वाज अ मिस्टैप। ओह, ही जस्ट barely survived there। मुझे लगा शायद से नॉकआउट जरूर हो सकते हैं, एंड द ग्रेनेड शायद से उन्हीं को नॉकआउट जरूर कर सकता था। बट देखिए जो ग्रेनेड्स यहाँ पे आते हुए, बहुत ही ज्यादा प्यारे ग्रेनेड्स यहाँ पे जाते हुए। वाइन ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी ग्रेनेड्स आते हुए, रिटेलिएशन भी यहाँ पे आता हुआ, और अल्ट्रा ईगोस सोलोमन स्टैंडिंग आउट देयर। डुओ में सर्वाइवर रहेंगे, बट वाइन ई-स्पोर्ट्स, अल्ट्रा ईगोस के पास अभी भी चांस है। वाइन ई-स्पोर्ट्स की पूरी टीम जोन के बाहर है। 9वां जोन यहाँ पे हमारा रहेगा। जोन भी बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है, द डैमेज भी पड़ेगा। वाइन ई-स्पोर्ट्स को फोर्स करना पड़ेगा कि वो लोग जोन के अंदर आएंगे। पोटैटो, राइजक और एक और प्लेयर अंदर रहेगा। वाइन ई-स्पोर्ट्स शायद से जो चिकन डिनर है उनके हाथ से धीरे-धीरे फिसलता हुआ। This is not looking good for वाइन ई-स्पोर्ट्स। सभी के सभी प्लेयर्स जोन के अंदर तो आ जाएंगे, बट वाइन ई-स्पोर्ट्स, आई गेस ये जो चिकन डिनर है फिसल तो सकता था, बट ये जो धीरे-धीरे आपने बरकत करी और उसके बाद में ये जो कमबैक दिया है वो नॉकआउट के साथ, शायद से चिकन डिनर आप ही का हो सकता है। A 1v2 situation, one clearly with the upper hand, but never count Kyo out. In a situation where he can pull off a chicken, he is always going to be able to do so. Defiant. Now with those grenades actually, missing on both of them, the circle will be affecting Alter Ego first, unfortunately. Potato closing out the distance between him and the player on the side of Alter Ego. He will be able to deal a bit of damage, but not enough. He will get taken down. Boyd finally pick out a chicken dinner, and all 3 areas once again great performance, but not enough. Exactly, that is the case, and winner chicken dinner has been done of 3rd match, and I mean it's just the 3rd one. इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो साइकिल है वो दोबारा से रिपीट करेगा, और देखते हैं राउंडो के मुकाबले के ऊपर कौन चिकन डिनर लेके जाएगा। बट दिस इज इट एज, वी आर डन द 3rd मैच, एंड देखते हैं ये चिकन डिनर ले सकता है। कितना ज्यादा प्यारा परफॉर्मेंस था हर एक टीम के थ्रू, बट स्पेशली टीम ASI8 and 4th Tribes, I have to say, दोनों पाकिस्तानी टीम प्लेऑफ्स के अंदर they were top 18, and especially 4th Tribes, they were doing #2nd in playoffs, and ASI8 and especially Crypto and Preetham, man, hats off
क्या ही प्यारी परफॉर्मेंस तरफ से आगे आने वाले मैचेस के अंदर, या फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी टीम रह सकती है, या फिर कोई इंडोनेशियन टीम आएगी जो लेके जाएगी इस चिकन डिनर को. बट एज वी आर डन विद द थर्ड मैच एंड हम लोग अपनी जो साइकिल को रिपीट करेंगे मैप रोटेशन की, रोंडो, फिर दोबारा रैंगल, एंड देन फिर दोबारा से हम लोग विटनेस करेंगे मिरामार को. मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मज़ा आ रहा है टू हैव अ लुक ऑन दीज फाइनल्स, बिकॉज शुरुआत से ये जो इंटेंस माहौल बन जाता है फाइनल्स के अंदर, इट्स क्रेजी. एंड हम लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हमारी. They'll probably be able to pull it back into their favor. I mean, we'll talk about that when the time comes. But as you said, this matchup, it was kind of brilliant coming in once again. Voin stepping up, getting that chicken dinner. I mean, still got to give credit to the side of Alter Ego Aries. They were so good at the end. They did fall short, but that was also because of the fact the manpower was kind of low when compared to Voin with the 4 players standing till the end. Pretty convenient if you have those 2 extra players against any squad. As a matter of fact, he did try his best though here at the end, but just was not good enough. We'll be taking a look at the replay as well, to the highlights coming in. We will get to see how things started and how things ended on the map before we move on to Rondo. But I also want to talk about Flash this time around. Nothing to show for. I mean, yes, a couple of decent fights here and there, dealt a lot of damage. गुलाब और संदल के खालिस हरकियात. ये नेचुरल है, जभी तो बेहतर है. लाइट रिफ्रेशिंग. of Miramar, it was insane. And especially अब हम लोगों ने mostly देखा है is that players and teams use those shotgun and UMPs or maybe assault rifle, but the combination is changing now. Edge, अब यहाँ पर players वो DMRs का use कर रहे हैं. We cannot see that typical classic क्या बोलते हैं bolt rifle action coming in, those Kar 98s, M24, and maybe that AWM walking up out there, but उतना तो ज़्यादा नहीं. But teams and the players अब वो लोग यूज़ कर रहे हैं TMR स्कोर 8x के साथ में. स्पेशली मिनी 14 का भी यूज़ हम लोग को देखने को मिला है. रेसबॉब एंड कुछ प्लेयर्स 4 थ्राइव्स एंड ASID esports के भी यूज़ कर रहे थे शायद से, if I'm not wrong. ASID Crypto was also using that DMR Mini 14 with that 8x and good taps coming in on 4 thrives as well. So थर्ड पार्टी का सिनेरियो बहुत ज़्यादा था इस वाले मैच के अंदर, एंड स्पेशली एज 8 टीम्स जिंदा थी और 18 प्लेयर जिंदा थे. I haven't seen that chaotic match into the end zone. I mean, it's one of the most chaotic one, but I mean, the chicken dinner team, kudos to you all, congratulations on taking this one. It was a really hard one to win because chaos tha last tak, our team zinda, and it was good, man. Overall बहुत प्यारा मैच था. but इसके बाद हम लोग start करेंगे Rondo, but we'll be having a look on the overall rankings and match rankings as well, and overall MVPs. But highlight की तरफ भी हम लोग जाएंगे. We'll be having a brief कि क्या हुआ था last match के अंदर to the audience joining in right now. But Edge, let's just have a look on the winning team stats. Yeah, 3 for Defiant, 3 for Potato towards the end, and we have Larry Razak that is coming in with 2 eliminations, Voxy 5 with 1 as well. Good amount of damage being dealt by a lot of these teams, a lot of these players, especially on the side of Voin as well. These were the stats and the situation of the team by the time they ended with the chicken dinner. So 10 points along with 9 eliminations. So that's 19 points. We'll be putting that up on one of the top teams, as one of the top teams on the overall. So if they can keep continuing performing decently like this, or I mean, this is good. Even if they get like 5 less than what they have right now, accumulated right now, even if they get 14-15 points per game, they should comfortably sit on #1 spot by the end of the grand finals. MVP? So this is the MVP, and Lily Boy 2K taking 6 eliminations, 4 knockout भी इन्होंने लिए थे, and 690 का damage. Man, what a good performance it was. But इसके बाद में Edge will be having a look on the top 4 players from the previous game
एंड हम लोगों ने देखा लिली बॉय तो MVP थे ही, बट मॉल भी ज्वाइन करेंगे एंड ये जो एक सिंगल प्लेयर था हमारे बूम ई स्पोर्ट्स की टीम से लास्ट तक सर्वाइव करते रहे एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गैदर दैट चिकन डिनर, बट वो नहीं हो पाया. बट एज ऑल्ट्रा ईगो के 2 प्लेयर हम लोगों को देखने को मिलेंगे. बद्रू ने 4 एलिमिनेशन पॉइंट लिए थे. ये है उनका बहुत प्यारा एलिमिनेशन एंड दीज आर द टॉप 4 players from the previous match. This is phase 1 finals and day number 1. This was match number 3rd edge. After this, we'll be having a look on the match rankings. Yeah, the damage dealt by Maul is ridiculous, as I've talked about it, right? You know, he was the one carrying the weight on the shoulder at the end. But we will also be taking a look at the teams that you kind of have to keep an eye out for. It's going to be 2K, Voin for sure, especially after that chicken dinner, and then Alter Ego Ares and 4 Tribes. Now, 4 Tribes, they usually start off the day on a really good note, but today it's not really going in their favor. But it's not over yet. There is still a lot of games left. We're only done with 3. We're only halfway there, and well, half day still yet to go. And 3 maps: Rondo, Angle, Miramar once again. So things are still not that bad for the side of 40. We will take a look at that, but for now, match summary looks something like this: 78 total eliminations, 2 grenade eliminations, 2 airdrops looted, no wake eliminations, 8,361 healing done, and the longest elimination at 364 meters is by Akra on the side of Arkra actually. My bad, I said Akra. But on the side of 2K, that is. And 2K is another squad that ended the playoffs on a really good note. But as the day progresses and as grand finals comes into play, 2K is also picking up the pace, as Voin will be the one leading the chart at the moment in terms of match ranking with 19 total points, all three with 17. 2K on 14, Team Secret have 9, RIQ have 8, Boom 7, 40 on 5, HKG and D Xavier have 5 as well, Glue with 3 points, Zengon as well, ASI8 with 2 points, DRS, Horror, Flash, 52 Esports and APG. Unfortunately, we're only able to get 1 apiece, and then Mr. International, but they were the first one to get eliminated, which was kind of unfortunate. And I thought maybe that is when HKG would have, stepped up and got more, but they did manage to get 5. But this is how the match rankings look like. Of course, these are the match rankings, and we did love it. Let's see, overall standings के अंदर क्या changes हम लोग को देखने को मिल सकते हैं. Because Alter Ego just totally decimating. Boom Esports भी बहुत प्यारे तरीके से अपनी टीम को टॉप के अंदर लेके आई है, टॉप 10 के अंदर. बट स्पेशली वाइन Esports के पास रहेंगे 19 पॉइंट्स एंड Alter Egos के पास रहेंगे 17 और 2K के पास रहेंगे 14 पॉइंट्स. सो दीज वर द टॉप 3 टीम्स. बट ओवरऑल रैंकिंग्स एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं पहली टीम जो है हमारी रहेगी Alter Egos 53 पॉइंट्स. वाइन Esports के पास में रहेंगे 35 पॉइंट्स. टीम 2K will be taking 29 points and simultaneously RRQ भी 29 points लेके जाएगी. Team Flash, Team Boom Esports, Team 52, ASI8 Esports and Team Secrets 5th and 9th position के बीच पे. After this edge, we'll be having a look on the overall the second page, and 4 tribes 9वें पायदान से 10वें पायदान की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं. पहले मैच के अंदर 4 पॉइंट्स, दूसरे मैच के अंदर 8 एंड 5वें मैच के अंदर उन्होंने 3 पॉइंट्स गैदर किए थे एंड 17 पॉइंट्स उन लोगों के पास में रहेंगे. बट ये जो टीम्स हैं यहाँ पर अभी दूसरे पेज पे, यहाँ से क्या कोई टीम आ सकती है टॉप 5 के अंदर, वो क्वेश्चन रहेगा. पहले दिन के अंदर शायद से वो कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल रह तो सकता है, but it's not impossible. It's possible to do anything, right? But the Xavier's, DRS, Team Blue, Hong Kong, Young on Galacticons, Hover, Misfits, Russian and Team Alpha Gaming. Let's see into the upcoming matches क्या आपके strategy के अंदर changes रहेंगे. But let's just have a look on the overall MVP. RQ still lepers, leading the charts there. K2, no change there. Barney, Snape also still sticking to those positions. IQQ also holding on to his position on towards 5. Not a lot of change here in terms of overall MVP, but I really like how Barney and Snape are playing. I really like the consistency coming in from the side of Alter Ego Aries. On one hand, they have no chicken dinner, but they're still the ones at the top with the consistency that they have, right? I also love the picking up a pace situation for the side of Voin. They started off not on a good note, but they are picking up some decent numbers as the day progresses. We will see if things are looking, good for them as we move on to the next few matches. We have 3 more left. We have Rondo, Erangel, Miramar coming into play. 40. This is going to be a lot of pressure, I might say, in terms of just players
in terms of people just having some expectations from them. But this is what the voting situation looks like. You can see the side of four tribes. Once again, the fans are just going berserk in the chat for sure. DRS also yeah, doing well, doing really well to be really honest. But other teams, they're kind of lagging behind when compared to these two teams. But SYED and Horizon Sports also have 2K plus. So apart from these, there's no other team that have crossed even 1,000 threshold. But once again, this time there's no fan favorite team as we move on to, and there's no benefits that they get. But it is just to see which team will have the most support from their fans. Yeah, that's the case for sure. And these are the fan favorite teams. And if you guys are wondering कि आप लोग कैसे वोट कर सकते हो अपनी फेवरेट टीम को, so all you have to do is कि एक हैशटैग लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, and then you have to write the team tag. So अगर आप लोगों को DRS को वोट करना है, so hashtag DRS, ASI को वोट करना है तो hashtag ASI8. So it's the easy process and rules to vote your team. And I'm sure that mostly सभी लोगों को एक चीज़ पता रहेगी. And let's see Edge into the upcoming one on the map of Rondo कि कौन chicken dinner लेके जाता है. And it is good one, man. I did really love the map of Miramar because last तक chaos रहने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा intense fight रही थी and 8 की team जिंदा रही थी 8वें zone के अंदर, so it was really one of the most highest one. We will see how these teams will be performing in the second cycle of the same map that we just witnessed. Right, we have Rondo and Angle Miramar coming in again. Boom were the one who did get that chicken dinner. But once again, my only focus is probably just going to be on the side of Alter Ego Aries. How are they going to be performing? 3 good games for them without a chicken dinner. They're still sitting on top. HKG as well. It's going to be another team that I kind of am looking out for because of the fact that they struggled, but they are picking up the pace slowly and steadily. And the one team that I still am hoping to see more of, it has to be the Xavier. I mean, Alpha Game. I was kind of thinking between Alpha Gaming and the Xavier, but Alpha Gaming as well. They are still struggling. They have not picked up the pace. It's still not looking good for them. But the Xavier, with the new iteration of players, it's just not what we know. It's not the Xavier that we used to. I mean, Hope's doing a really good job right now. One Young's doing really well as well. Everyone else, it just feels like they lack the coordination a little when compared to the start hitting those high gears before it's too late. As we can see, Boom were the ones who got that chicken dinner on the map of Rondo. Erangel went in the favor of 52 Esports, and well, Miramar, it was one who came on top. But here's the thing: all 3 games, Alter Ego, they were one of the top teams. Well, exactly. And Alter Egos, Alter Ego Aries, as we talk about. Edge, we can edition of Snape. So imagine right now, Rosemary is enjoying with his vacation, so he won't be joining, and he's just enjoying right now. So imagine if Rosemary would be playing in the team of Alter Egos, we could have seen much more domination. But into the upcoming one, हमारे पास में 3 और मुकाबले बाकी हैं, रोंडो, इरांगल और मिरामार. देखते हैं. अभी तक तो हम लोगों ने जो 3 मुकाबले पहले के मैचेस में देखे हैं, तीनों की तीनों टीम्स जो है वो डिफरेंट विनर्स थे. एंड एज जैसे आपने बोला कि जो हमारी टीम ऑल्टर ईगोस थी वो हमेशा टॉप के खिताब जीती हुई एंड टॉप में आती हुई. बट लेट्स सी आगे वाले अंदर जो मैचेस रहेंगे हमारे, कौन सी टीम जो है वो चिकन डिनर लेके जाएंगी. और 3 और मैचेस हैं. So audience, if you guys are tired watching the stream, so please go get yourself some snacks, maybe some popcorns, and sip on the water. Because ये जो मैचेस है और भी ज़्यादा लंबे रहेंगे एज, क्योंकि पिछला मुकाबला तो आधे घंटे से भी ज़्यादा चला था. बट अब ये रहेगा हमारा chaotic मैच, ये रहेगा हमारा रोंडो का मुकाबला, और ये रहेगा हमारा चौथा मैच आज के दिन का. और देखते हैं कौन सी टीम लेके जाएगी विनर चिकन डिनर को. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, ये है हमारा फाइनल डे 1 ऑफ फेज 1, और मैच रहेगा हमारा चौथा. देखते हैं कौन लेगा इस विनर चिकन डिनर को. वी आर स्टार्टिंग ऑफ इन द रीजन ऑफ मेरान, टेस्ट ट्रैक, न्यूयॉर्क फैक्ट्री, बैम्बू स्टेडियम. जो रीजंस हैं बहुत ज़्यादा पास है.
फ्लाइट पाथ। सो इजीली यहाँ पे हमारी टीम्स जो हैं स्टेप इन कर सकती हैं, पर 4 टीम्स यहाँ पे लगातार उतरती हैं न्यूयॉर्क फैक्ट्री के रीजन में। ऑल्ट्री ईगोज, टीम 4 थ्राइव्स, ये दोनों टीम तो हम लोग को पता ही है, बट 2 और टीम है जो एक्चुअली स्टेप इन करेंगी न्यूयॉर्क फैक्ट्री के रीजन में। मे बी एक वायन ई स्पोर्ट्स जो हमने देखा था पिछले मैच के अंदर टोरंटो के मुकाबले में, तो शायद से 3 टीम्स हो सकता है एज की हम लोग को फाइट लेते हुए देखने को मिले। Recall available, so we will probably be looking at some really aggressive plays happening. We will be expecting to see teams getting into those really early game skirmishes, trying to take the duels, and you can see Boom already dropping down, and there is a solo man from the side of 2K. This is not looking good. He does manage to pick up a Uzi for himself, but will he be able to do anything with that weapon is the question. Towards New York's factory, we will have multiple teams. We will look at that in a second. But boom, Octa will drop immediately. 2K, boy, the MVP last time. Will he be able to do anything? I don't think he has any, meds to work with, so he will get taken down. He will not be coming in. That's 1 point already for the side of Boom, and they will be happy to take that for free. That one man just go into a different place than his team. I'm not really sure if he wanted to go for the recall or if he wanted to go for a really quick early game duel there. But either way, it didn't turn out too well for him. And now, as we direct our attention once again towards the side of New York's factory, it's going to be 40 and SYED also here, and Hora and APG. So that's 4 teams battling it out towards New York's factory. And which team will be the one coming on top? At the moment, it is 4T still. 3 eliminations. 4 थ्राइव्स हर एक गोली का जवाब लेते हुए IQ के पास रहेंगे 2 एलिमिनेशन, यस के पास रहेंगे 1 और एलिमिनेशन, व्हिच इज गुड। 4 थ्राइव्स ऑल टुगेदर 3 एलिमिनेशंस के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और DRS की टीम भी यहाँ पे फाइट ले रही है। बट अभी हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे इस फाइट के अंदर, क्योंकि न्यूयॉर्क फैक्ट्री के रीजन में जैसा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 4 टीम्स का ये जो क्लस्टर है वो बन सकता है, और वही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 4 थ्राइव्स, लेट्स सी अपकमिंग मोमेंट के अंदर क्या आप लोग डोमिनेट कर पाते हैं या फिर नहीं। बट अभी के लिए अल्फा गेमिंग, एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुका है, नारी यहाँ पर अपने क्लोज रेंज बैटल के साथ वो AKM लेके आ रहे हैं। सो देखते हैं वो AKM से क्या कर पाते हैं या नहीं, बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं एस्ट्रल की शायद से यहाँ पर यस को मिल चुकी है, व्हिच इज गुड। T24 OP क्लोज रेंज इनकाउंटर यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अल्फा गेमिंग धीरे धीरे यहाँ पर शायद से नॉकआउट्स निकालेंगे एंड फलक को डायरेक्टली फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, व्हिच इज गुड। बट अभी हम लोग देख सकते हैं IQ एक प्यारा नॉकआउट और टीम 4 थ्राइव्स, ये एलिमिनेशन यहाँ पे चलता हुआ, यही तो हम लंबा रुका हुआ था, और यही लंबे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब रोंडो के मुकाबले पे अगर टीम 4 थ्राइव्स एलिमिनेट करना स्टार्ट करेगी तो एलिमिनेशन उनके रुकेंगे नहीं। 7 एलिमिनेशन और न्यूयॉर्क फैक्ट्री के राजा चारों के चारों शेर, अभी एक तो डाउन हो चुका है पर उसका यहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत इजीली आ जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं टीम 4 थ्राइव्स एज धीरे धीरे यहाँ पे अपने कदमों को आगे बढ़ाती हुई, और नारी को भी स्पॉट कर लिया जाएगा। शायद से यहाँ पे ये नॉकआउट जरूर आ सकता है। MP5 को यूज किया जाएगा, रिलोड भी यहाँ पे किया जाएगा, और there you go, the grenade was good, not able to find any sort of knockouts। 4 थ्राइव्स, ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी स्ट्रेच होगी। Volley is going to be a stretch, as you said. 40 at the moment, 7 eliminations. They're looking really good, and I think they finally found the groove that they were looking for here on the map of Rondo, as Young Gun Galacticos are going to get taken down in the first. As the first team, with only 1 elimination, unfortunate. You can see the Indo flags there just reigning supreme on the overall at the moment. All 3 areas, 1-2 KRIQ, and even Boom in 7th position. They might get even higher as the game progresses, because this game, I believe they are going to be trying their best to accumulate more points and take those early game fights as well. As the Grenadier from the side of Point comes in, Team Secret will be eliminated as well. Alpha Gaming now putting the screws to the players on the side of 4 Tribe. Yes, the man with 3 eliminations will get dropped. Might be revived though here with no problem whatsoever. Nari on the side of Alpha Gaming will take the hit, and it's the UMP of Falak that works and will drop him, and confirmed as well. 8 eliminations for 40, and they're just getting started. और अभी न्यूयॉर्क फैक्ट्री के राजा ये लोग दबदबा तो बना के चल रहे हैं। 8 एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे। अल्फा गेमिंग यहाँ पर शायद से रिट्रीट करना सही मौका रहेगा उन लोगों के लिए, नहीं तो शायद से एलिमिनेशन आ सकता है। रिफ्यूज बहुत ज्यादा पीछे चल गए। 4 थ्राइव्स, SI8 का एक प्लेयर
अभी यहाँ पे जिंदा है ASI8 K2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं? K2 यहाँ पर बिल्कुल छुपे हुए हैं और हम लोगों को पता है दैट फोर्थ राइव्स को पता होगा कि ASI8 का एक प्लेयर जिंदा था पिछले मैच में और यहाँ पे फलक को भी डाउन किया गया था उस राउंडो के मुकाबले में। बट अल्फा गेमिंग वो जो सिंगल प्लेयर है उसके पीछे भागा जा रहा है। बट यस बहुत ज्यादा लो है एचपी के ऊपर, बैंडेजेस है तो अप्लाई कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मोक कर लिया जाएगा कवर के लिए और शायद से फलक को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इंटेल है, पीछे से यहाँ पे फलक जा रहा है अपनी एयूजी से स्प्रे लेगी और देवी गो फलक यहाँ पे एक बहुत प्यारा नॉकआउट करेंगे, सीधा फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। अल्फा गेमिंग slowly and steadily losing the pace edge, but there you go, 4 thrives। यही तो हमको 4 thrives देखनी थी, नो एलिमिनेशन। अभी तो शायद से 6 ही मिनट हुए गेम में और अगर शायद से ऐसी एलिमिनेशन और ऐसी ही हम लोगों को उन लोगों की तरफ से डोमिनेंस देखने को मिला तो शायद से जो फेजेस के अंदर हमने देखा था 27 पॉइंट एक सिंगल मैच से निकाले तो वो शायद से डेजा वू वाला मोमेंट हमको दोबारा से देखने को मिल सकता है। Alright, sports holding on. DRS also trying to get as many points as possible pretty early as well. Cyclone taking a bit of damage now. Two points for DRS. Hora, none at the moment. Xavier, none. HKG also not doing well. I thought both these teams might actually, you know, get some really quick points at the start, and we're talking about the DMARs here, the Mini 14s coming into play, and they will be in action. They will be seen in action again. We will have to wait and watch if they're going to be of any use here in the situation on the map of Ron. At the moment, RRQ with one elimination, they will be going for a rotation. And I like this moves coming in from Pragos. He's taking a longer rotation, a different one, so that he will not be expected to show up in that angle, as Voin might have to take this fight against DRS or RRQ. But one thing is for sure, he will have to come out and RRQ will take advantage of this. And Lapper, there you go, the MVP at the moment will be the one dropping down the players on the side of Void. It's just one though. They will have 3 more standing. And the recall might come in as well, but they have 4 eliminations. And RRQ, they'll be happy as that's going to be their second one. That's going to be the case right now. DRS और RRQ दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के अंदर। पहला एलिमिनेशन यहाँ पे निकाला जाएगा लैपर के थ्रू, बहुत प्यारे तरीके से इजाफा किया जा रहा है इस गेम के अंदर। पर DRS अभी भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रैग और XMPLZ उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है। अगर यहाँ पर अगर ऐसे डैमेज डील करते हुए रहे RRQ के अगेंस्ट तो शायद से डोमिनेंस आ सकता है RRQ का और एलिमिनेट भी हो सकती है हमारी टीम DRS। But there you go, XMPLZ वो भी डाउन हो जाएंगे। जेनफोर्स के ऊपर एक प्यारा ग्रेनेड फेंका तो गया था बट शायद से एलिमिनेशन नहीं आ पा जाएगा। फ्रैग बीइंग द सोलो मैन स्टैंडिंग, क्या यहाँ पे ये एलिमिनेट कर पाएंगे हमारी टीम RRQ को? और इजी नहीं रहेगा। DRS 3 प्लेयर जिंदा तो है बट एक ही प्लेयर यहाँ पे ब्लीड कर रहा है, सो इतना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दैट ट्राइंग कि शुरुआत में इनिशियल बैटल के अंदर फाइट ले सके और एलिमिनेशन पॉइंट्स को कवर अप कर सके। बट देयर यू गो, जेनफोर्स यहाँ पे एक इजी नॉकआउट लेंगे एंड डायरेक्टली अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं DRS के प्लेयर्स रिस्पॉन कर दिए जाएंगे, सो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी एच। बट RRQ डोमिनेंस दबदबा बना के रख रखा है रोंडो को मैप के ऊपर। बट 4 थ्राइव्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 10 एलिमिनेशन यहाँ पे 4 थ्राइव्स ने ले लिए हैं पहले दिन के अंदर। मैं तो बोल रहा था कयामत कयामत, अब 4 थ्राइव्स क्या फिर से हम लोगों को वही सेम चीज देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। बट RRQ ऐसे रोटेट करके जोन के अंदर जरूर जाएंगे। Definitely, we might get to see the pure dominance coming in from 40 again, especially with the way things are going right now. Right, they're already up to 27 points, 10 eliminations into this one. Pretty dominant performance. Xavier, they need to step up to be a fight between them and Alpha Gaming, and now they are going to be guns blazing. A 4v4 situation. Alpha Gaming and Xavier, only one team will come out on top here. SCSO is going to be out in the open. The grenade will be enough to drop him down. Xavier at the moment still coming in strong. Will be confirmed thanks to the S12K. Refuses up close to personal hope. Okay. We will talk about that in a second. What a move that was from Hope. And the Molotov now will be pushing them back at the moment. They are both players getting taken down. Alpha Gaming, I believe there's only one more plan standing, or not for long. They will get eliminated in 16th position with 3 eliminations.
That's it. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले इंसान को नेटवर्क भी ऐसा चाहिए जो पाबंदी ना लगे, बस लिमिटेड बन It has and takes, I mean, gives a lot of damage onto that player. That was ridiculous. Ridiculous number counting in the Xaviers. 4 I gotta eliminations. wait and watch that again. Yeah, man. I mean, those moves are coming in. And shotgun का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है. And कुछ यहाँ पे ऐसे ही shots लिए जा रहे हैं. 8x है शायद से. And what are you trying to do? कोई player वहाँ पे सामने उनके है नहीं. But DRS frag. Genforce के ऊपर यहाँ पे knockout डाला जाएगा. बहुत प्यारा knockout. And Genforce को यहाँ पे directly finish off भी कर दिया जाएगा. RRQ. DRS frag out of the zone से यहाँ पे कुछ fight लेने का try कर रहे हैं. But जोन का भी डैमेज यहाँ पे पड़ेगा. जोन को भी यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो शायद से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है. लैपर बहुत प्यारा परफॉर्मेंस है आज के दिन के अंदर एंड ओवरऑल एमवीपी भी है. 4 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स है. जेनफोर्स का यहाँ पे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया गया है, वो मेरे को नहीं समझ आ रहा वो यहाँ पे क्यों नहीं है. बट जोन जो है यहाँ पे क्लोजिंग करेगा और हम लोग यहाँ पर तीसरे जोन की तरफ बहुत ही जल्दी पड़ेंगे. बट वही का हमने देखा था 10 एलिमिनेशन यहाँ पे इन्होंने पहले मैच के अंदर लिए थे और उसके बाद में दोबारा से एसाइड क्रिप्टो को डाउन किया जाएगा. और देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क फैक्ट्री और टेस्ट ट्रैक के रीजन में ये जो जोन है खत्म होगा. एक सेंट्रलाइज जोन यहाँ पर बढ़ता हुआ और बूम ई-स्पोर्ट्स की टीम भी रोटेट करेगी जोन के अंदर. बूम ई-स्पोर्ट्स रेसबॉब आप यहाँ पे देख सकते हो वो अपनी टीम से कितना ज्यादा दूर है. और क्या यहाँ पे इनकी आईजीएल्स के कॉल आउट रहेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा. रेसबॉब में भी हो सकता है सोलो स्काउट कर रहे हैं अपनी टीम को आगे एंड देन मे बी इनिशियल होगा उन लोगों का जोन के अंदर आना. बट RRQ 3-man स्टैंडिंग टीम, अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम यहाँ पे फाइट नहीं ले रही, ना ही रोटेशन क्लैशेस हमने को देखने को मिल रहे हैं. RQ 4 points and only 2 players standing. There is a lot in store still for this squad. There is still a lot of time, a lot of teams, a lot of players still in. 15 players, 15 teams, I'm sorry. 59 players. All 3 Ego areas. I mean, they have not yet started their domination in terms of eliminations. But Boyne feels like they might want to take this fight against 4T on the other part of the map. As we take a little flash, they're at the moment enjoying surviving, for a little longer than what they usually do in terms of manpower. 4T, they've lost Falak already, but they're putting the screws to the players on the side of Boyne as well, who will be in a bit of a trouble, but RIQ is here as well, so this could be a 3-way, and they probably gotta be a little more cautious with the moves because they can't really risk getting taken down. They're still towards test track, they're not out of this vicinity, but they don't really need to worry about that as well because of the zone still favoring them at the moment. जोन विल फेवर देम फॉर श्योर. बट अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं 4 थ्राइव्स और आई मीन जोन के अंदर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जहां पर थे वो वहीं पर हैं और वहां से हिले भी नहीं है क्योंकि जोन न्यूयॉर्क हमारी जो टीम 4 थ्राइव्स है वो न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे उतरती है और वहीं पे जोन यहाँ पर एंड हो सकता है और शायद से वहीं पे जोन का खात्मा भी हो सकता है. बट अभी हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे अल्टर ईगो एरीज 2 एलिमिनेशन पॉइंट ही हैं उन लोग के पास में. मेन टीम्स का ये जो क्लस्टर बन चुका है पीछे से द ज़ेवियर्स और बूम ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई. अल्टर ईगो एक और इंडोनेशियन टीम, हम लोग को पता है कि इंडो का ये जो डोमिनेंस आ रहा है आज के दिन के अंदर वो शायद से धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा. बट देखिए ये वियतनामी टीम अल्टर ईगो एरीज पहले प्लेयर को नॉकआउट करेंगे द ज़ेवियर्स के और एक और यहाँ पे एलिमिनेशन पॉइंट उनके नाम आता हुआ. और अभी हम लोग देख सकते हैं हमारी टॉप 5 टीम्स रहेंगी अल्टर ईगो, वाइन ई-स्पोर्ट्स, RRQ, टीम 52, 2K ई-स्पोर्ट्स. मे बी हम लोग को टॉप 5 के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. बट अल्टर ईगो स्नेप का जैसे ही एडिशन हम लोग को देखने को मिला है, टीम अल्टर ईगो यहाँ पे बहुत क्लीन तरीके से रोटेट करती है जोन के अंदर और जो 4v4 फाइट्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करती है. सो स्नेप का एडिशन बहुत ज़्यादा प्यारा. बट एसाइड क्रिप्टो DRS वर्सेस एसाइड, ये फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लेडीज एंड जेंटलमैन. देखते हैं कौन जीत कर जाएगा. Xavier, they need to, get more points desperately. They can't really end here with 5 eliminations. They will need more, but Won Young is bleeding right now. Russell is in a tough spot. He will be able to get one more, but all 3 areas. On the other hand, they're not a team to, back off, especially in situations like this. In the midst of all this, Glue actually get taken down. With 4 eliminations, Flash will be the one putting the screws to them. They'll be happy with that 7 eliminations. As Maul will be taking down the players on the side of AE.
Alter Ego Aries looks like they have finally met their match, as Boom will be third party in that fight, and Alter Ego Aries feeling the heat as Misfits International are gonna get taken down as well in third, in 14th position with 3 eliminations. 40 at the moment surviving with the amount with just 3 players, 4 tribes that is. Boom. Can they get more? The Xavier still feeling the heat, but Boom will let them live at the moment, I believe. Yeah, they will. Boom esports देखिए ये 4 थ्राइव्स के 4 शेयर, अभी तो 3 ही जिंदा हैं. फलक यहाँ पर अभी डाउन तो हो चुके हैं, बट 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन लोगों के पास में अभी ही आ चुके हैं. किस नजाकत से और किस क्लीन और प्यारे अंदाज से ये लोग 4 थ्राइव्स के सभी प्लेयर्स आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और शायद से डोमिनेंस और डोमिनेशन बिल्कुल दिखाएंगे और बताएंगे क्यों लोग दबदबा बना के रखते हैं रोंडो के मैप पे, क्योंकि हम लोग को पता है 4 थ्राइव्स का बेस्ट मैप जो है वो रोंडो ही है. देखते हैं क्या चिकन डिनर आ पाएगा या फिर नहीं, और अगर चिकन डिनर आ पाता है तो शायद से 4 थ्राइव्स ये छठवें पायदान से तीसरे या दूसरे पायदान के ऊपर आ सकती है. बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर 4 थ्राइव्स टू सर्वाइव विद ऑल दीस 3 प्लेयर्स. दे लॉस्ट वन. फलक यहाँ पे जा तो चुके हैं, बट ये जो 3 भाई हैं शायद से तीनों तबाही जरूर करके जाएंगे. 10 प्यारे एलिमिनेशन. पीछे से यहाँ पर एक और टीम आ रही है. इट्स एक्चुअली टीम RRQ. सो RRQ वर्सेस 4 थ्राइव्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, बट वाइन esports 7 एलिमिनेशंस तो इनके पास में भी हैं. आज तो शायद से वाइन esports का भी दबदबा बनता हुआ. रेस बॉब डायरेक्टली यहाँ पे पुशिंग करेंगे वो सोलो वैन प्लेयर के ऊपर, और द Xaviers डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा. 12 टीम्स यहाँ पर हमारे पास में रहेंगी. But let's just see, ladies and gentlemen, who will be making a move till the end and taking that winner chicken dinner mall. यहाँ पे नॉकआउट है, ब्लीड आउट हो रहे हैं, जोन के बाहर है. रिवाइवल शायद से बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा. चौथा जोन इतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं, बट हो रहा है esports. ये बेटी यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है. Beautiful performance coming in from one once again. They're keeping up the pace. They're taking it in their favor as well. 9 eliminations, just one shot of 40, who's the one leading the charts in terms of eliminations at the moment. As we see Boyne trying to take down Pragos there. Beautiful shot coming in, but not enough. But 805 will hold on to his ground, I believe. Has given away his position now. Test track still being the hot spot for all of these teams to actually go for the clusters here. But this could turn out to be a chaotic play towards the end. We will wait. Exactly. We'll wait for the last 2 circles to come into play. At the moment, DRS is gonna get taken down as well, as Alter Ego Aegis is still surviving with 2 players. Voin is still in that vicinity with all 4. And 4 thrives on the screen. It's 11 elimination, man. Falak is down. I mean, it's not the best thing, but let's just see into the upcoming moment what we can see from this particular team. 4 thrives, 3 players standing, 12 elimination, and the domination is coming in slowly and steadily. They are coming into the zone. Let's see आगे वाले टाइम के अंदर क्या ये लोग चिकन डिनर निकाल पाते हैं या फिर नहीं. 10 तो एलिमिनेशंस यहाँ पे, I mean टॉप 10 के अंदर ये लोग आ तो चुके हैं. 12 एलिमिनेशन यहाँ पे ये लोग ले चुके हैं. But on the other hand, Alter Ego Aries, Bunny 5 taking some of the shots. 2 of the players of team Alter Ego is surviving. 4 thrives. यहाँ पे एलिमिनेशन धीरे धीरे यहाँ पर कवर अप करने का ट्राई करे. 2K को भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा. पीछे से यहाँ पे टीम RRQ भी आ रही है, बट यहाँ पे 4 थ्राइव्स की जो पोजीशनिंग है बहुत प्यारी है. We will wait and see how things turn out for the side of 40, as at the moment we will focus a little on the side of Team Flash. With 7 eliminations already, 3 players still standing. They are just camping towards the edge of the circle, waiting to see if there's going to be any team that can be caught off guard, moving on to their ground. All 3 players, 2 players surviving, but the 2 players that are surviving are the ones that don't really have any points for themselves. So the main players are kind of gone, but I mean, do not take them lightly here. The last 2 Sovereign players inside of Alter Ego Aries as well, they are deadly. As 2K, they will go down in 10th position. HKG team HKG, they are getting eliminated from this particular game. We are down to our top 8 teams. ASI Crypto versus team HKG. ASI 8 was the reason of team HKG getting eliminated, which is really insane. ASI 8 Crypto has been spotted as well. देखते हैं ASI 8 esports, ये जो एक और पाकिस्तानी टीम है, क्या यहाँ पर खेल और गोल घुमाएगी. अभी हम देख सकते हैं क्रिप्टो के ऊपर ये जो शॉट्स आ रहे हैं, जो 16 की तरफ से 25 की तरफ से शॉट यहाँ पे लिए तो गए, बट यहाँ पर कोई भी नॉकआउट नहीं आया है. क्रिप्टो ही जस्ट barely surviving, and K2 का जो
कहर है, ये जो डोमिनेंस है ए साइड क्रिप्टो की तरफ से और K2 की तरफ से, ये यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई। और मैं आप लोग को एक और चीज बता रहा हूँ, ये जो ए साइड टीम है, एक और पाकिस्तानी टीम है, इनका ग्राफ नीचे नहीं ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। ए साइड क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर चिकन डिनर निकाल पाएंगे या फिर नहीं? बट एच SYED Esports is only surviving with that single solo player, which is Crypto. Silent. As all three Guerreros just barely surviving right now with these two players. And his teammate just, I mean, it's like, yeah, I need some utilities. Can you just give me, can you just pass on a couple pills and give me an energy drink maybe? And his teammate's like, yeah, sure. And he will get that. And then he will immediately go back to his position. I really like that. So now they have more information waiting for the perfect opportunity to strike. All three areas, they don't really need to make insane moves. They have decent performance. They have, they have decent placement on the overall. All they need to do is get another decent game. Chicken dinners are not a big problem. I don't even think they're worried about getting chicken dinners. Maybe if they get it, yes, wonderful. But I don't think. I mean, I'm pretty sure with the way things are going, they have other plans, not just chicken dinners in terms of accumulating points. As we now see, Resbob trying to spray down the players inside of Flash will be unsuccessful to do so. But beautiful. Contribution coming in from everyone. Everyone on the side of Boom has managed to get 2 apiece. So that's 8 eliminations. Not just playing for the chicken dinner, but playing a little bit more. थ्राइस के यस ने स्पॉट किया यहाँ पे RRQ के प्लेयर को नॉकआउट लेंगे और शायद से सीधा यहाँ पर प्लेयर चाहते हैं उस नॉकआउट को फिनिश या फिर एलिमिनेशन या फिर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना। ये जो ग्रेनेड है बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, शायद से फिनिश ऑफ ले सकता है, नहीं बट फिनिश ऑफ तो नहीं पा पाया, बट IQ पीछे से वो फिनिश जरूर ले लेंगे। लैपर और यूट्यूब कॉम वुमेन सर्वाइवर भाई 14 एलिमिनेशन ले चुके हैं, क्या खा के आए हैं आज हमारे टीम 4 ट्राइब्स के प्लेयर और स्पेशली येसेस और IQ। आई मीन इस प्लेयर के पास में तो देखिए 6 एलिमिनेशन मिल चुके हैं और IQ ये दोनों तबाही बन रहे हैं। ये जो ग्रेनेड है शायद से यहाँ पे एलिमिनेशन जरूर ले सकता है, बट लेपर पीछे से नहीं, ये स्पॉट नहीं किया, स्पॉट किया जाएगा। और देखिए ये रिफ्लेक्सेस है हमारे टीम 4 ट्राइब्स की तरफ से, 15 एलिमिनेशन और आज हमारे यहाँ पर डोमिनेंस दिखता हुआ टीम 4 ट्राइब्स की तरफ से स्लोली एंड स्टेडीली और धीरे धीरे अब शायद से यहाँ पर एक स्लो पेस की तरफ जा सकते हैं। 8 टीम से अच्छे एलिमिनेशन मिल चुके हैं। मेरा तो सजेशन टीम 4 ट्राइब्स को यही रहेगा कि थोड़ा सा स्लो पेस करें, एलिमिनेशन मिल चुके हैं, अब चिकन डिनर या फिर पोजीशनिंग के ऊपर फोकस किया जाए तो वो बेटर रहेगा। बट नहीं, वो जो ग्रेनेड है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, मुजाफा एक और ग्रेनेड की तरफ जाएंगे, बट नहीं, ये जो नॉकआउट है बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। IQ being the swarm survivor, YouTube को we have seen फेज ऑफ्स के अंदर ये प्लेयर था हमारा ओवरऑल MVP। शायद से डायरेक्टली यहाँ पर IQ पुशिंग करने का ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा लो है, HP अगर हील नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। यस को स्पॉट नहीं किया जा सकता है, स्मोक ये जो है फेट नहीं हो रहा है, स्मोक ऐसा धुंध के जैसा छा चुका है अभी इन लोगों के विजन के आगे, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। YouTube कौन पास आएंगे, ये जो ग्रेनेड है दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, शायद से 4 ट्राइब्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। सेम गलती जो रोंडो के मैप पे फलक ने करी थी, ग्रेनेड यहाँ पे पिन किया और शायद से वो एनिमेशन में स्टक रह गए। 4 ट्राइब्स, दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर द होल टीम, दे आर गॉन, बट 15 freaking elimination. Oh man, the dominance coming in from the side of 4 tribes today is just insane, Edge. 4 tribes have finally picked up the pace. We kind of were waiting for the situation here, the way things have turned out for them in and better, and they're not going to stop anytime soon. They're not gonna stop anytime soon, that's the question. And you can see all these Indonesian teams, Vietnamese teams just having the spot. All the 5 top teams are on screen. Yes, I hate Crypto, the Pakistani player, solo man survivor। क्या Crypto की यहाँ पे दरकार रहेगी, शायद से नॉकआउट लेने का ट्राई करेंगे। वाइन पोटैटो 5 स्प्रे ले रहे हैं या फिर Crypto स्प्रे ले रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। बट ये जो टेस्ट ट्रैक का रीजन है, जो ट्रैक है उसके नीचे और उसके आसपास प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ट्रैक के ऊपर कोई भी नहीं है, अगर शायद से ऊपर कोई प्लेयर रहता तो उसका चिकन डिनर जरूर आ सकता था, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है एज। और ये जो जोन है बहुत ज्यादा खूल खिला रहा है, ये बहुत ज्यादा खेल खिला रहा है शायद से आप। और देखिए टीम फ्लैश, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट, जो कवर थे शायद से वो बिलबोर्ड के ऊपर गिर गए थे, वो शायद से उन लोगों को कवर मिल जाएगा, व्हिच इज गुड। टीम फ्लैश राइट नाउ ASID Crypto really loot the HP boss, taking the final below. Top 4 teams on the screen, top 9 teams. Let's just see who's going to be making the move edge.
It's the final battle. All four teams, you said this is going to be the final battle, and now Flash, they have a really good chance to close things off here as well. Boyne, they can go for a second chicken dinner. This will be a great start to the grand finals if they are able to do so. Especially after the performance that they've been putting out. Yeah, they've been pulling off great performance throughout the whole day. Team Flash, RQ, Boom Esports, One Esports are the team surviving till the end. But there we go, Boom Esports. They're gone, they have been eliminated. This is not looking good for the team. But we are down to our top 3 teams. Let's see who's going to be making the move. RQ surviving with that solo man standing. The Indonesian teams are here to dominate. One Esports on the other hand, I mean, they're not making a move and having a 50% of taking the winner with the chicken dinner, which is really high. But Edge having 14 eliminations in the end and then surviving and taking the winner with the chicken dinner, maybe that could be the scene. And I guess this team is here and they can deserve to take the winner with the chicken dinner. The man advantage once again clearly for Wine. So they must be the favorites coming into this one, and 2 Indonesian teams and a Vietnamese team. Well, we all know how deadly Flash can be, especially in situations like this. Even though they have a man disadvantage, you can never count him out. Vika is still alive. He is the MVP for the squad. That first game with 11 eliminations is ridiculous, and this was the map where it happened. So we will be waiting to see if something like that can be pulled off again by him or any other player on the side of the Flash side. RQ though, that one surviving player is probably going to be trying his best to stay alive for as long as possible. Maybe get a couple of frags here and there. YouTube.com is out in the open. Stage 8 will be coming into play the next minute. So they will need to make some moves. And at the moment, I don't think anyone except Voin will have to make a move. But Voin also will have enough space to work with, enough cover to work with before Stage 9 comes into play. And once Stage 9 comes in, all hell breaks loose. There will not be any more cover. There will not be any more zones being raided. At the moment, we already have the fight breaking between Flash and Voin as Vika is taken down. Vika is taken down. I mean, he's not done and dusted right now. He's down to his knees. They can go for the easy revival coming in. But right now, Wine Esports, Rise at 5. We have seen this particular player doing and dominating great into the upcoming moment. But Edge, we are down to a two Indonesian team and 1 Vietnamese team. Team Flash, the Vietnamese team, right now they're having 3 good players standing. They're gone and down to 1, but oh my god, oh my lord. We can see Team RQ just getting eliminated from this region and they're gone. The Rondo, the map is just done and dusted for them. But right now, 15 elimination from the side of Team One Esports. This is the thing we wanted to see. But Vietnam versus Indonesia. Let's see who's going to be making move. Both trying to gather one more knockout, but not able to find that particular knockout. But Tops going up close, personal with that AUG. Edge, what do you think, man? Brian Esports or Team Flash, which is going to be making the move? But wait, Tops, as we are talking, he's down. All of a sudden, Flash were the ones dominating, and now One pulled it back into their favor, I may say. But at the moment, we have Wade Zeta now making the moves. He's coming up and close and personal. Vika will not be able to connect that shot. Oh, he's going to get taken down. No, Flash is only down to 1 player standing. Wine will be able to get that extra point for themselves. Both is bleeding. He will have to be quick with the revival, but he won't be coming in time. Potato is going to be confirming that finish, and now all of a sudden, Flash might be in trouble if they get taken down here. That grenade will not be dealing any damage, but I think the second one might be good enough. Potato 5 is really far. Vika is going to get taken on as well, and all of a sudden, Wine might just be looking at the second chicken dinner here, but that's not going to be the case. It stops with a beautiful grenade, and Zeta is going to get taken on as well. It's now a 1v1. Tops versus Potato 5. The revival will not be coming in, but the grenade is in the face. Oh my god, Wine! What an end! That grenade to the face, and Wine Esports will be the one coming out on top with another winner, chicken dinner. And these Indonesian teams, man, they are dominating in terms of the position points, in terms of elimination points, in terms of everything. Another great game of Flash, but in the end, it's going to be Wine Esports with another chicken dinner. Man, the Indonesian teams are just popping off one more again and one more time. There we have it. We have seen the 4th match. What a great winner chicken dinner it was, man. I mean, my heart was racing, and it was a nerve-wracking match, and especially Edge, the grenade we have seen in the last moment, right from the side of Wine Esports, and then Tops just getting eliminated like that. That was intense, man. I don't want to say anything. It was just pure goosebumps and pure instincts coming in from the matches.
But Edge, let me just remind the audience one more time, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या कर रहे हो? 141 के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई गेस आज का हमारा गोल होने जा रहा है Edge, you say 35,000. Do you think can audience do 35,000 subscribers here today? It's pretty much possible. I mean, come on, it's you guys, it's the fans, it's the audience, the viewers. I mean, if you guys think it's possible, I mean, if you guys want to do it, you probably will do it. So yeah, we'll probably stick to that. I mean, with the way Flash were playing as well, going back into the game, of course, it was possible, right? It was possible for them also to step up at the end, and they almost made it work. I mean, they're beautifully, Tops did play out beautifully towards the end. Coming in, but at the end, it's just not enough. Yeah, surely it wasn't enough. And man, what a good match. We started off really strong on the map of Rondo, and then we are down to our top 2 more games, which is going to be Wrangle and then Miramar again. Hope everyone is just enjoying the matches because I am. And I mean, the intensity and the graph is just getting higher and higher. And especially the performance from the teams. It's not actually playoff phase Edge. It's all about the finals, and we are coming up with the hell fights here into the upcoming days. We are having 4 more days, right? I mean, it's just day number 1, and we will be heading towards the match 5, which is going to be Wrangle. But before than that, we'll be having a look on the overall standings. आप लोग कहीं भी मत जाइएगा because आज के matches प्लेऑफ स्टेज से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो आज इंटेंसिटी है और जो सीरियसनेस है प्लेयर्स एंड टीम्स के, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. बिकॉज इट्स द मोमेंट, यही टाइम है, यही डू और डाई सिचुएशन रहेगी इन टीम्स ऑफ प्लेयर्स के लिए. या तो वो विजेता बनेंगे और एल्स दे विल बी द रनर अप्स, राइट? और एल्स मे भी हो सकता है टॉप 3 भी ना आ पाए. सो इट्स ऑल अबाउट द सीरियसनेस, इट्स ऑल अबाउट द IGLs मेकिंग दोस रोटेशंस एंड IGLs मेकिंग दोस कॉल आउट्स एंड द रॉ पावर कमिंग इन फ्रॉम द टीम्स. Definitely, as we've already talked about it, a lot of the pressure is going to be on the IGL, and well, this game it did turn out well. I mean, even for the side of Alter Ego Ares, they were not in the top 2 at the end, but they did have decent performance coming into this one as well. Void will probably be surpassing them now. I feel like in terms of points, for Alter Ego Ares, I don't think they have anything else to. I mean, I don't think they have anything to worry about just yet. They can still relax and do what they're doing. They don't really need to change things up, take a risk. Just we're still in day number 1, and things are looking really good for these for these teams at the top. Void, RQ as well, they're picking up the pace. Boom, and the side of Alter Ego Ares, of course, along with Flash, if you ask me. Yep, and this is it. We are done with 5 matches, and after this, we'll be getting more and more, man. The intensity is getting I think higher. 4. I think we're done with 4. I mean, yes, I was about to correct myself, but you did. Thank you very much, pal. But we are done with 4 matches, and thank you for correcting me right there. I'm super duper excited to see the Wrangle, right? But Wrangle is all about nostalgia, right? Because Edge, we have seen those mini 40s coming up as well, and especially हमारी बहुत सारी टीम्स है जो शॉटगन का यूज़ तो शायद से कभी छोड़ेंगी ही नहीं, और शायद से ये जो शॉटगन मेटा है, मेरे को नहीं लगता ये इतना जल्दी जाने वाला है, क्योंकि शॉटगन को आप कितना भी नर्फ कर लो, वो क्लोज रेंज के अंदर डेडली रहेगी. एंड जिस तरीके से ये जो मेटा आया और टीम्स ने अडाप्ट और प्लेयर्स ने अडाप्ट किया है क्लोज रेंज फाइट के अंदर, right? It's good. It's not about spraying, it's not about spamming those bullets and reigning supreme, but it's about precision. When you're wielding a shotgun, आपका जो एक पंप होता है, एक जो शॉटगन का चंक होता है, उसको बहुत सही तरीके से लाइन अप करना पड़ता है प्लेयर के हेड या बॉडी के अगेंस्ट, and then only you can get that knockout. I mean, players and audience do know it, but I mean, we are just emphasizing on shotgun meta. How long it has been, maybe 1 or 2 years or maybe more than that, and this meta has been not changed yet. Yeah, that is true. I mean, the shotguns are still coming out on top, and I mean, I really like how players are using it to good use and pairing it with different weapons to their advantage and according to the situation as well. And yeah, DBS 686 sawed off as well, as a matter of fact. Now these weapons are deadly close range, and yeah, I mean, it all comes down to how you use it and what you pair it with, right? I mean, if you have 2 shotguns, you're pretty much screwed mid to long range. But if you pair it with an M4 or an AKM or whatever weapon of choice that you have, you probably will have a really good, you'll be in a situation where you can close down the distance. Even if the opponent is going further away, you still have that AR to work with
rifle to work with. If not, then that shotgun will obviously reign supreme and will completely decimate your enemy. And yeah, I think it's in the meta, yes, but it's also the Yeah. fact that these teams, these players, they are mixing and matching it with other weapons, which makes it that much more deadly. Yes, and especially, I mean, a question to audience watching out there. देखो मेरा personal favorite तो it's always AKM. I mean, AKM का hip fire, the way we go, and it's really satisfaction when you use that AKM. मेरा favorite AKM है. Edge का भी पता है, he loves to use that AWM. हाँ, ये बंदा, whenever we play PUBG Mobile, he always go for the drop. But That's it the was only one. us. I mean, it was us, Edge. ऑडियंस आप लोगों की फेवरेट गन कौन सी है कमेंट सेक्शन में डू लेट अस नो बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स और मे बी ऑडियंस जिन लोगों को शॉटगन यूज करना अच्छा लगता है बट आई जस्ट वांट टू सी द ओजी इज राइट देयर जो आज भी AWM या फिर कार 98 या फिर मिनी 14 को प्रेफर करते हैं बिकॉज लॉन्ग रेंज फाइट्स एंड 8x फाइट्स आई मीन इट्स रियली फन जिस तरीके से स्नीकीली आप लोग नॉकआउट्स वगैरह निकालते हैं बट एज आई मीन दिस वाज अ क्वेश्चन टू ऑडियंस एंड विल बी हेडिंग टुवर्ड्स टू आवर overall rankings, overall MVPs and match rankings again. But Edge, what do you think? Which will be those top 3 teams coming up? कौन सी ऐसी 3 teams रहेंगी जो overall standings के अंदर अभी अपना किताब लेके बैठेंगी इस day number 1 पे? I mean, Alter Ego is still there, probably in the second position. I feel like maybe Flash would have jumped up to a second position, third position. Second will definitely be Alter Egos at the moment. Voin should be the one sitting on top. So I think Flash might be the ones, taking the third spot. So these are probably my top 3. Once again, speculation. We will be waiting to see the overall standings coming in. But what a game this has been. I mean, coming in from Wine once again, that's 2 good games in the grand finals. I mean, playoffs. I don't even recall if they have more than 1 chicken dinner in the playoffs. I feel like they had only 1. Right, they had only 1 chicken dinner in the entirety of playoffs, and now already 2 in the first day. By the way, keep in mind, and not just any chicken dinners. They managed to get themselves Food Panda. कोई ऑर्डर कर दे यार. मैं करता हूँ. for decent number of points. Yeah. And this is it. But Edge, do you want to guess how many subscribers we have right now on the channel of 141 Esports? What do you think? Because we did give a goal to our audience, and we need 35k subscribers today. Do you want to make a guess that how many subscribers we are having right now? And can you please remind the audience again one more time to please subscribe and let us reach our goal? Yeah, I mean, see, here's the thing. I mean, since you're asking me this question, it means we have not yet hit 35k. Smart. I kind of suck with the prediction and the guessing there. So once again, guys, if you're watching at home or anywhere else on YouTube, well, once again, make sure you subscribe so you don't miss out on any of the action. This is Asia Battle Words Chapter 3 PUBG Mobile by 141 Esports, and you don't want to miss out on any action. This is phase 1 and grand finals. Yes, we have phase 2 playoffs and grand finals. We have phase 3 playoffs and grand finals again. So it's a very long tournament. You don't want to miss out on any of the actions. You don't want to miss out on your favorite teams or players, stepping up. And the way things are going, it feels like every team and every player will have at least one decent day, and you never know when that is. So for you not to miss it, make sure you subscribe and hit that bell icon. Might as well just like the stream if you see what you're saying. Turns out it's a good form to support the stream and us here, just working in the background. But Yeah. coming down to the game once again, right? 2 rondos done, 2 Indonesian teams coming out on top yet again. Towards Boyne did get themselves another chicken dinner as well, so that's 3 teams, 3 Indonesian chicken dinners, if you ask me, in terms of region, that is. But here's the match highlights coming into play. As we will see in York's factory, these fights were prolonged forever. Exactly, and Force Rise, they start off really strong. RQ, on the other hand, they started
leaping slowly and steadily, and I mean taking those baby steps. Gen Force, on the other hand, a good matchup today, indeed. And there we have it, the Xavier's hope. Oh, the grenade! It was so amazing. I missed it, but thanks for the highlights and thanks for the production showing these insane highlights and that covering that moment. That was a calculated trajectory coming in, but all through egos and the Xavier's good fight initiation. But I mean, we can never forget जिस तरीके से फोर थ्राइव्स ने डोमिनेट किया था आज के दिन में और आज के इस मैच में चिकन डिनर का इजाफा नहीं हो पाया एंड स्पेशली मुजाफा ये बहुत प्यारा स्प्रे था और यहाँ पर एक तो गलती हुई थी आई मीन एंड ये जो रिफ्लेक्सेस थे मुजाफा की तरफ से बहुत प्यारे थे और ये जो गलती है फलक ने ये सेम गलती करी थी और यहाँ से हम लोगों को देखने को मिला सेम गलती IQ की तरफ से भी रही थी बट इन द एंड वी हैव सीन टीम फ्लैश जस्ट सर्वाइविंग एंड टेकिंग फाइट अगेंस्ट टीम वाइन esports but again edge I mean Wine esports being the best throughout the whole thing and there we go potato 5 that winning moment and the winning grenade it was on point. Yeah, that grenade was so beautiful to